ओवरलैंडर्स एसोसिएशन का ऑफिशियल लॉन्च यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। सो मैं कैमरे को स्टेबल करने वाला हूँ, मैं इसको एक जगह पे माउंट करने वाला हूँ और अब आप लोगों को ऑफिशियल इवेंट आगे दिखाई देगा। Good afternoon all. So I'm welcoming you all on behalf of all the founding members and EC members of Overlanders Association of India. So this is a formal launch event. We just formalized the association before 2-3 months, and we think we will physically launch this platform for the people of this nation. And we choose Ahmedabad because most of the members are from Gujarat and nearby regions. So we choose Ahmedabad as a launch destination for this event. Otherwise, this association is nationwide. So I thank all of you to be present on our invitation. We are also going live on our Insta and our YouTube. So before start this event, I request all of you to please stand up for a national anthem, and then we will formally start the event. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ आज्ञे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Thank you all. So now I hand over the mic to our event host, Mr. Haresh Shah, who is also a founding member. So I will now hand over the mic to Mr. Harish, please. Thank you, Yagnesh. So, ladies and gentlemen, the birth of Overlanding Association of India took place a few months back, as informed by Yagnesh. And the biggest reason behind that was that we wanted to form a group, a very strong group of same like-minded people who are interested in overlanding, camping, traveling, etc. So that in case we have to approach the government of India or maybe the state governments also, we have a very strong representation. Besides that, we also had something in mind like if anybody is traveling, for example, our good friend Chirag is traveling from Gujarat to Tamil Nadu, and in Tamil Nadu he faces any issue, he can straight away contact our members who are based in Tamil Nadu, and they can come around and provide him all the support that he requires. Payment ke saath. So these are the few things which were actually in our mind, that we should form this group, a very strong group. And that's the reason the birth took place of Overlanders Association of India. तारीफ के लिए धन्यवाद. Now I'll request the CEO of DJ Toyota, because I'm in filming, so sometimes it comes DJI, but I'm sorry for that. DJ Toyota, based in Ahmedabad, opposite Kargil petrol station, to come forward with our president, Mr. Vishwakiran,
to light the diya. With that, I may request Mr. Wadia, who is with us today, to come forward. Now may I request our senior looking member's wife, Pauna Bhavi, to come forward and do the diya lighting, please. By the way, she's a very good cook. And that's the reason Kalpesh Bhai has very good food. Lal lal dal. May I also request the youngest member, female member, I need to say, of Overlanding Association of India, Sarah, to come forward and do the diya lighting. Thank you to all the guests. You may please take your seat. So this makes the official launch of Overlanding Association of India. तो जोरदार ताली तो बनती है दोस्तों. Thank you. Now I'll request the President of Overlanding Association of India, Mr. Vishwakiran, to come on the stage and bless us all and say something about the association. Mr. Vishwakiran, please. How's the sound? Is it okay? Audible on the end? So I have a few words in terms of what has been our experience with overlanding till now in India, and I wanted to add some of my thoughts so that we could have an overview into what we are trying to do, why we are here, and what we want to do in the near future. So what is overlanding, if I can define it so that we understand what we are talking about, is the concept that all of us here are doing, where we take our vehicles to maybe to the remotest parts of the country, and with that vehicle we are able to autonomously manage, living in the vehicle, cooking in the vehicle, and even traveling the distances that we travel. That's what in my mind is overlanding. Now, obviously there are variations to it. Some are extreme in nature, where we go to the heights of the Himalayas or the deep of the desert. That's one of the extremes of overlanding. The other one could obviously be, where you're taking a camper van, which, with relative comfort, sometimes in relative luxury, you're able to take that vehicle and go to maybe a few hundred kilometers around your city and enjoy a few days out in the wild. That also counts as overlanding. So between these two extremes, we have members in our country now who are taking part in this adventure that we have started. And we want to continue and grow this group to a point where we have a significant presence that can be, a kind of a exclusive club of sorts. That's what we want to do, where we are able to bring together the standards of overlanding compared to the international standard. We should be as good, if not better than them. That's the goal we have in our association. So I won't go into the history of what overlanding has been. Because all of us here have that mind share, of having been done that for a few years, and we all understand that, even the people who did the expeditions in the long past,
they count as overlanders technically because they also been out into the wild. Similarly, we are also doing the same, but obviously in a much more regular, much more city-bred fashion. In terms of what is involved in overlanding for us, the challenges that we face is around location. So where do we overland? In India, what is the good place that we could go for overlanding? Obviously, there is no one answer. There are lots of places in India we could go, and that's what we want to do. We want to be able to select these places, be able to identify and make sure that these are safe and these are possible to go legally. For example, we don't want to venture into reserve forests without permission, obviously. We don't want to venture into places near the border where it is insecure. So those kind of things, obviously, those limitations is what we want to make sure we understand and we play by the rules. And once these rules are understood by our group, we will make sure that these rules are published and followed. That's one of the goals that we have. The other thing in terms of security, in India, what is happening is that there are a lot of places where overlanding per se is frowned upon. If you look at socially, if you run into a village where you start suddenly camping, obviously the locals will have reservations about what you're doing there. So that we need to make sure that we communicate right. We're able to establish a communication between the locals who are there and us in such a way that it is formal and it is not dangerous. So that environment is what we need to create, and we are obviously forming all the rules and frameworks and making all the associations with the different government bodies to be able to give that safety net for all our overlanders. So the other big thing which I have in my notes in terms of one of the highlights that we need to take care of is the environment. Most of the time we have seen is that there is an ugly face of tourism in India. That ugly face is about people going there, making a mess, making noise, thinking it as though even deep in the forest you're able to party. No, that's not overlanding at all. That's the absolute opposite of what we want to do. What we want to do is make sure that we leave no trace behind when we reach a particular destination. We have to be environmentally conscious. We should be very, very ethical about where we go and how we go about doing our camping. So that's one of the key highlights. So while doing that, obviously, we need to make sure that safety is followed, all the precautions needed for having a safe drive, having a safe stay. Those are also kind of documented well and kept. And that's the framework that we've created. If you go to our website, we've tried to document all that. We've created a forum where we're discussing all this, and we will make sure that these frameworks are broadcast to our group, and whoever joins as a member is abiding by those rules. In terms of future of overlanding, what we have in mind is this group has to grow into potentially thousands of people who are able to now participate in overlanding throughout the country. We will create a database of all these locations, the facilities available, the rules and regulations, the kinds of vehicle, the technology involved. In camping, there are several aspects to it. How do you stay in it? For example, the rooftop tents or the camper vans that we build, the documentation of all that we want to do. And similarly, create like a complete database of all this information that a new overlander should be able to come to our association and be able to find that out. And that should be easy to use in terms of, once you read through that frameworks that we provided, you should be able to easily create a camper van of your own and participate in the group. What we've tried to do is that every year, at least every quarter more or less, we will have events that the Overlanding Association will organize, where we would invite people from the group to participate. And these events would be typically trips that we have taken across the country. For example, on the 12th, starting the day after tomorrow, there's a group going to Umlingla and coming back through Manali. So that would be Kashmir, Ladakh, back through Himachal Pradesh. That group is also a part of our association, and Satya here is leading the group in terms of giving guidance from his extensive experience. So those kind of trips will be arranged. There will be an annual meetup. The annual meetup is this year is slated for the 24th of December. In that meetup, we would invite all of you to come to maybe some location in India. Right now, we have a few locations in mind. We will shortlist that and announce the location. That one location would be an annual meetup where people come together with their vehicles and have a mind share. We'll have a few days together, and hopefully the New Year party will be together. So that will be one occasion. Similar to that, there will be these meetups, the overlanding trips, as well as
in near future we will have trade shows where we will discuss how the equipment will be there, what are the new standards, what is happening worldwide in terms of overlanding practices. Those will be discussed and highlighted, and whatever is applicable to India, obviously we will use. So that's the the few topics that I would like to cover in terms of the key things we want to do as an overlanding organization. Going forward, what we see is a very active, growing group. I see that at least every state has a few hundred members, and these members are actively pursuing overlanding and are there just for the passion of it. Obviously, there is no business gain, or there is no money involved here in terms of earning something out of it. We are all here because we share this passion for the outdoors, and that's what we want to exploit. This is a completely non-commercial, non-profit kind of an organization where we want to bring people together, like-minded people. We want to bring them together and be able to grow the organization to new heights. With that, I welcome you all to the association. I welcome us all to have this new set of experiences in this year and next year, and hope we grow a lot forward. Thank you. Thank you, President Sir. That was the brief history and the future of what Overlanding Association of India is going to do in India. As he said, tomorrow a small group of cars is going to go towards Umling, something like that. Umling. Agar or if we just keep everything formal, तो मजा नहीं आता है, तो इसमें कभी करना पड़ता है. So excuse me for that. Now, I would like to thank our title sponsors, DJ Toyota, based in Ahmedabad, who have given us a huge support. Besides other sponsors like Siska, UPV Solar based in Bangalore, Bimra in North India, C2 Summit, Nomad Adventure Overland, dealing in rooftop tents, and G-Mile. 6 Mile, sorry. So thank you all for your huge support to success of this launch program of Overlanding Association of India. So may I request our beautiful ladies to one by one to go that side, take a bouquet, and I'll name the person to be given to, please. So let's start with Smita ji. So today we have with us Director of DJ Toyota, Mr. Raj Joycer, please. Mayuri, please go that side and take a bouquet. Don't feel shy, come on. Welcome another Managing Director of DJ Toyota, Mr. Jimmy Dolakia. Ruchi, please. Ever smiling lady in our group. Please welcome Mr. Rajneesh Arora, CEO, DJ Toyota.
Mr. Wadia of Wadia Bodybuilders, Bhavna ji. Thank you all. To go towards the success of any program, we always require blessings. And for the blessings, we have received best of luck messages from Dr. Saurabh Pardi. He is the MD and Commissioner of Gujarat Tourism Gandhinagar. Mr. Chaturvedi and Mr. Srivastava, they are both our Forest Conservation Officers Gandhinagar. They sent their best of luck for the success of this today's program. अरे मैं इसको तो ताली बजाएंगे भाई पानी वानी पिलाओ तो Okay, so now we move to the next. I'm going to invite a very young and talented DIY को नहीं DIY नहीं है. He knows his job. He's with us with a big beard, Mr. Vishal Joshi, to come on the stage. He is the owner of XS Overland Ahmedabad, and he will say something on overlanding, the mechanics of the vehicle, etc., etc. Hello. All right. Good evening. Good evening, everyone. I think a lot of you know me, and a lot of you might have heard of it. So I'm Vishal, founder of Overland, changing the name now to Bushman's Four-Wheel Drive, for those of you that might be interested. My history, I started overlanding in 1999. I was a young lad. I was born in Dubai. I grew up in Africa. So more or less lived in that whole lifestyle where there's dunes, there's the bush that we call it in Africa. So I lived that lifestyle. At the age of 19, 20, I leaded that for about 1 year. A lot of terms and conditions were put onto me, and finally I managed to get a Pajero. Prior to that, I was more a street, fast and furious guy who drives fast cars, and I would enjoy that. And Pehli Pajero आई, it was a Friday, very excited. 19, 20-year-old, 5-6 लड़कों को इकट्ठा किया, कुछ बियर खरीदी, कुछ बल्ब खरीदी, डिसाइड किया बुश में जाएंगे. जिंदगी में पता नहीं था 4-wheel drive होता क्या है. ठीक है, ऊंची गाड़ी, a higher vehicle, right, bigger wheels should do the trick. That's what my idea was. I come from Botswana. So those who have seen the Top Gear episode of Botswana, they would know Makhali Khali pans and the salt pans and all that, similar to our run of Kachia. So 100 kilometers drive from home, we reached the place. Within 5 minutes into the place, we were stuck for the next 3 days, not knowing how to even engage 4-wheel drive. 4 low, 4 high, pull job. दूसरी stick किस लिए वो पता ही नहीं. 3 दिन रहने के बाद, luckily we had this old white guy, 60-year-old. I don't know how many of you are 60-year-old here, so I wouldn't want to name them. But 60-year-old people, ये तो evergreen 60 नहीं है. So had a white big bore 7-8 इनके जैसे ही हट्टे कट्टे मस्त. And he says, young man, how long have you been here? So for about 3 days. Doesn't seem like a difficult place to not being able to take your car out. You should be able to do it. Manne bola, but no, makes sense, can be done. And he's like, why don't you put it into 4-wheel and try it out? Just reduce the tire pressure. Acha, tire pressure pe reduce karte hain. Okay. He looked at me, friends are looking at me. And finally he said, sit in the car. I said, okay, sat in the car. Says, he looks at the vehicle, it's still in 2-wheel drive. And he's like, do you know what a 4-wheel drive is? Ego bhi koi cheez hoti hai na. So, yeah, I've been doing it for years. He doesn't know I got it yesterday. That's the first time I've ever driven it.
you know. So 5 minutes later, he's like, boss, will you please step out? I said, okay. So I stepped out, sits in the car, 1 minute, puts into follow, boop, it's out. My friends love me. बहुत खूबसूरत उन्होंने अल्फाज अपने सुनाए मुझे. 3 दिन we had run out of beers, we had run out of whatever we had carried. We were, because we were in salt pans, it's salty, so you get dehydrated. So radiator पानी लगा के हो चुका रहता है. So yes, it was a very good weekend that we had because it was a Friday, Saturday, Sunday, no network. So Monday, Tuesday when we reached home, till today, when I say now I build four-wheel drive vehicles, when I do these kind of vehicles, I can't say this that I know what I'm doing to those friends because they know my history. If I go and tell them I build vehicles or मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, भाई रहने दे 3 दिन हम रुके थे. There's no point, right? Today I can be a professional and tell you how to build a vehicle and all that. So that's my history, right? Now coming to building vehicles, this is what I do for a living. This is my passion. This has always been my passion, and just to share my experience in India, a lot of times we find especially with what happened in 2020, a lot of people, my perspectives have changed. The whole overlanding scene has changed in India now, right? So thinking about how to build a vehicle, your first choice, according to me, would be what is your motive? Do you need a four-wheel drive? Do you need a 4x2? Do you want to go off the road? Do you want to go OTR? Do you want to explore unknown territories? Or do you want to stick to roads and a little bit of kacha roads here and there, kacha places, farmhouses? That's where you want to camp. So that's your first decision that you need to take. Second, I feel, is how much of a luxury do you need? It's easy. I know Chirag has been overlanding for years. He doesn't need much. I've seen his setup. We've worked on his cars a number of times. Simple setup, very rugged, very gypsy-like. If that works for you, well and good. If you need a bit more luxury with age, firstly, we need comfort and we need luxury. So we need to decide what is our base going to be. So now whether it's a 4x4 or a 4x2, that's where you take a decision. Once you've decided whether it's a 4x4 or a 4x2, then you need to decide what kind of luggage are you going to carry. See, if you're going to carry a lot of luggage, if you're going to do about a month of trip, you need a lot of stuff with you. You need food, you need supplies, you need clothes, you need all of that. So then you need to decide whether you need a pickup truck or do you need a wagon. Since DJ Toyota is here, I can clearly say whether you need a Fortuner or do you need a Hilux. Exactly, simple. Yeah, more or less the vehicles are same, the base is same. But because you have a load body at the back, you can carry a lot more luggage, you can carry a lot more load. It is also a kind of a blank canvas where you can design the vehicle the way you want to. I think one of the finest builds I've seen is Harish Bhai's. And I think you also have S-Cap made, am I correct? Somebody else, I'm confusing with somebody else. Yeah. So I've seen a couple of builds, very well designed. So that's the difference. So any newcomers that want to decide whether I want to go into this kind of hobby or passion, then you need to decide certain things of what do you want to do. Right. Now, once you've decided on the vehicle, there are certain things that you want to understand. You're building a 4x4. Suppose, let's say, for example, you bought a Hilux because that's the latest trend going on. You bought a Hilux. Every vehicle, no matter how good they are, they have limitations to what terrain and what you do with it. If you keep abusing it, they have a limitation as well. So then you need to start planning how to build a vehicle. Right. You can start, first, you'll have protection. Right. So you need to protect your vehicle. Your vehicle is capable enough of majority of terrains, right? But there are going to be extreme places where you want to explore, you want to go overlanding, you want to camp somewhere where not many people go. I mean, if you want to camp in city, well, there's no overlanding there. You want to get out into a remote place, right? So you want your vehicle to reach wherever it needs to go. Now, for that, you need your basic protection. You might need an underbody, you might need a front bumper, you might need a rear bumper, because you might keep scraping your bumpers every now and then. You get tired of replacing it, right? And you'll decide, okay, you know what, once in a while, I need to change this, come up with a protection system where it works. Yes, sir. Need money. Of course, budget is also a big factor when you decide a vehicle and how you go for it. But again, talking about money, I've had a lot of customers, especially on the new Thar, every time they go off-roading, you break the bumper once, twice, thrice, 4 times. You're going to keep replacing that factory bumper over and over again, right?
Eventually, you come to a point where I am tired of this. Let me just spend once and for all and get a metal bumper in place so that it's a piece of mind. Right? Saves what? I think benefits of all of that. I mean, you can add a lot of accessories if you're putting in a metal bumper. That's also one of the reasons why people put metal bumpers. I mean, Australia or Africa, they're wildlife that trouble you. That is why they have bull bars over there. We don't have that kind of issues. Right? All we worried is at the end of the day, we are Indians. ठीक है, 4 बार बम्पर टूटेगा, 5वीं बार हम मेटल का लगा देंगे. ठीक है, उतना खर्चा नहीं करना है. Right? और उसके अलावा, if you want to put recovery systems, you want to put winches, you want to mount lights, you want all of that, you need a metal bumper or any kind of bumper in place that can hold on to that as well. Right? So these are your basic protections. Then comes overlanding, big factor, your sleeping arrangement. How do you want to sleep? Where do you want to sleep? How comfortable do you want things? There are various type of RTTs available. One of the major companies in India right now is Nomad. 6 mile deals with Iron Man. They do important ones. So you have a lot of options how you want to sleep, where do you want to sleep. Can the vehicle carry that kind of load as well? You know, a stock Isuzu roof can only carry 30 kgs. Most of your roof racks, you know, that you're going to put on your vehicle to actually carry your tent, right? They would be easily 50, 60 kgs. So that is something you need to keep in mind as well. It's easy to spend money and it's easy to waste money as well. So when you plan a vehicle, take your time. Take your time so that you know where you're going to put your money in. Right? You want to be safe as well. There are hundreds of dealers or even modifiers like me that stay in every part of India that would be willing to sell people anything. Is it useful to you guys? That is what you guys need to decide. Right? You need to plan your vehicle. How do you want to do it? Start camping more and more often. You will see what you need as a person. You know, there is everything available on YouTube to tell us this is the finest overland build available. Do we really need it? No. Yeah, a basic setup that can keep you safe, that can meet your requirements, right? And you can have a good time. We're out there to have a wonderful time than to be worried about all the gizmos and gadgets that you put in. You know, I get a lot of customers, here's the money, do everything. Doesn't make sense. They never appreciate. I have the other set of customers that will plan their spending. You know, okay, I bought this vehicle. What's my next stage? What do? I need better tires. Okay, I need to put bigger tires, better tires. That's my first set of expense. Now, I need to put in some underbody so that I don't want a bumper right now, but I want an underbody. If I go to any off-road place or any off-the-road terrain, I should be satisfied or I should be carefree that my underneath, my engine, my gearbox, everything is safe and secure. Right? So you might want to put an underbody. Right? That is your first 2 stages of starting. Once you get after it, the next stage when you go ahead, you know, then you start planning, okay, now I'm beginning to use the vehicle. Now I know what I want to do. Now the next stage would be, I want to do a bit of overlanding now. So I'm going to carry a tent, maybe a Decathlon 2-person tent. I use a Decathlon 2-person tent, go out to my friend's farm, start camping, see the feel of it. Is that enough? You may do that for another year and then say, oh, you know what, this is not my lifestyle. Or you know what, this is my lifestyle, but I would love some creature comfort. I would want some phone chargers. I want to have a laptop charger. India is a hot place, so you might need fridge in a vehicle. You might need some. Even if you're going up north towards the hill, you might need some heating facilities as well. So then you start planning how your vehicle should look like. Right. So my suggestion to everyone would be: take your time, decide on your base, go slow with it, enjoy the build process, and enjoy the lifestyle the way you want to live that lifestyle. That's what I would want to say. Thank you. Thank you, Vishal. Let me ask the guest, how did you feel with the wealth of information given to you all? Excellent. जैसे क्लासरूम होती है उसमें बैक बेंचर्स भी होते हैं जो कभी पढ़ते ही नहीं है, वैसे ही वो बैक बेंचर्स ताली नहीं बजा रहे हैं. Thank you. Now, as I said earlier, that any launching or opening of any organization requires
blessings. As I had said earlier, we received blessings from 3 government officers, but today we have with us esteemed guest from DJ Toyota, the Managing Director, Mr. Raj Joycer, and Mr. Jimmy Dolakia. May I request both of you to come on the stage? Bless us, and you can say something. वैसे blessing में मैं पाँव पड़ूं तो मुझे कुछ मिलेगा क्या? First of all, good afternoon, everyone, and a pleasure to be a part of this event and something which I dream of doing sometime, but I have not yet started is overlanding. And DJ Toyota is an organization which is very young, like all of you. We have just completed 1 year this year, September, and it's a pleasure that we have certain customers here as well who are interested in Hilux, and we met Harish ji quite some time back for one of our off-roading events, and he was very kind to give us inputs on his car and Hilux as well. So coming to DJ Toyota, we always strive for what customer wants rather than we pitching a product. We always feel that we should understand the need of the customer, like Vishalji mentioned correctly, that what you need is more important than what we can offer. And that's the philosophy we also believe in. And coming to Hilux as a product, it's a proven product worldwide. I don't know why it came so late to India, but whoever has seen the product elsewhere is like it should have come 10 years back in India, because we have certain people who are doing off-roading since 15, 20 years, and they wanted such a good vehicle in India, and finally we have it. And given the modifications that people are doing, even we are amazed to see the capabilities of the car, because we are also exploring the car. We have seen the reviews of other customers overseas, but experiencing it firsthand, it gives us more confidence on the vehicle than we already had. So that's it from my side, but looking forward to interacting with you, all of you. My team is here to assist you with any queries regarding Hilux. We have Vikas here. We have our CEO as well. So we have 2 Hilux, I guess, displayed at the ground floor. Please feel free to ask any questions. Also, we have our very good friend, dear friend, who is modifying our Hilux for us. He is right here. And if we can please invite him on stage as well. Please come, sir. Please come. So, sorry. Acha, Uttam ji bhi hai. Uttam ji, please come here, please. You are an ambassador rather than we speaking for the product. Uttam said he has taken the Hilux from us for a few months back, and he has modified it and he's been using it. So these are the people who will give you the correct feedback regarding the car, because one is the person who is modifying it, the one is the person who is using it here. So if I can please ask both of you to share your experience with Hilux. Sorry if I'm taking more time. It's fine. Hi. Actually, what he mentioned is that Hilux is a very versatile model, basically, and a lot can be done on it. Overlanding is one of the options. We are exploring a lot more options also on it. Currently, we are making a fire truck on it, basically. So it's a good base platform to start off with. Eventually, when people progress into better, bigger, more luxurious vehicles, it's a different idea of it. But basically, to start off with, it's a good platform. Thank you. First of all, hello to all Overlanders here, and everything about Hilux is good. I have seen Top Gear show, which they have built on Hilux, so it was very good. And for that reason, and I've used this vehicle in Indonesia and Africa as well. So it is proven vehicle, very good vehicle. I'm also trying to modify it, and I'm also part of our group. Thanks to Vishwaji, he has added me in the group. And looking forward
and gaining a lot of knowledge from our group as well, because I'm new overlanding person, so I'm learning a lot from you guys. So Hilux is very good vehicle, definitely everybody knows that. So thanks for. Thank you, Chief. Lastly, you might have a curiosity that what DJ stands for. It's not what you think it is. DJ is a joint venture between Dholakia and Joycer Group. So my surname is Joycer, and he's my brother-in-law Jimmy. Their surname is Dholakia, so that's how it's DJ. Now over to Dholakia's policy. Good evening, everyone. So I was about to start with how DJ name came into existence. So thank you, Raj, for letting everyone know. So DJ is obviously a joint venture between Dholakia and Joycer family. It's a 1-year-old organization, and rest everything has been covered by Raj. But I would only like to point out or add a point is that we are coming up with one new setup, and by January, and we'll be ready with the setup, and it is coming in Vastral part of area. Thank you. Thank you, AG, for inviting us. It was a pleasure. Thank you. Thank you so much, Mr. Raj Joycer and Mr. Jimmy Dholakia. Now, he said that they are related to each other. They formed a company, right? આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે ઘી દોડે તો ખીચડીમાં જ જાય. अगर हिंदी बोलने वाले जिनको ये समझ नहीं आया है तो मैं ये कहूंगा, नहीं समझ में आया? अच्छा, शाम को समझा दूंगा. घी जब गिरता है तो कहीं और नहीं जाएगा, वो अपनी खिचड़ी में, मतलब जो अपनी वो चावल और मूंग दाले का बनाते हैं ना खिचड़ी, उसमें ही जाएगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा. तो जो भी होगा वो वहीं रहेगा और कहीं जाने वाला नहीं है. इस तरह का संबंध उन्होंने बनाया है. Now, as he said, there are 2 Hilux on display on the ground floor, just outside the President Hotel. Please take your time when the function finishes, have a look, talk to them, try to know more information on Hilux. And then if you decide one day, just visit the showroom, give the money and buy it and enjoy it. Sorry? Test drive भी है? Yeah, test drive भी है. Yeah. Now, little bit on Hilux, and then we move to the next program of today. Falguni and I have driven the Hilux Automatic few months back, actually. And to be honest, I found it a very good vehicle. But the best thing for me was that Falguni also could easily drive that vehicle. So अगर कहीं हम लंबा जा रहे हैं तो मैं आराम से बगल में बैठ सकता हूँ, और मुझे विश्वास है कि वो Hilux ऑटोमेटिक चला रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. जो प्रॉब्लम होना था वो थोड़े महीने पहले, मतलब थोड़े दिन पहले और थोड़े वीक पहले हो गया है मुझे, तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगा. So let's move to the next speaker. Now we have Mr. Vikas Thakkar from DJ Toyota. He'll say something on, I think, Hilux or whatever he wants to say. So may I invite Mr. Vikas Thakkar on the stage, please. Thank you so much, sir. I hope this is audible. And thank you all for coming over here all the way back, leaving the India-Pakistan match behind and seeing our highlights. So basically, मैं salesman already paper फूट गया. I'll just take you more about the highlights. Like, can we have the next slide, please? I'll just go through it. We have only the pictures. And so we backbencher तो क्या लखी ना देता. Yeah, no worries. Yeah, so this is the Hilux. We have some photographs also. Next, please.
Yeah. So I'll talk you about what are the features, what are the exteriors, what are the interiors, what we have in the car. You'll feel home to a Fortuner. Many of you have I see. But जब मैंने ये फोटो देखा तो वहाँ पे कहीं भी Hilux नहीं थी. So I have an open space and I invite you all to buy it. Right. Next please. So this is the legacy of the Hilux. So many years, more than decades, and the car has been into so many countries. But now that we have in India, we have the 10th generation of the Hilux, and which is this red car which I have got it down. We have modified it, and we also have a stock car which you can obviously have a test drive for. So these are some overlanding sites where we have taken some photographs. We have some set of accessories also. I'll take you with the exterior features of the car. We have a bold grille. We have the 18-inch super chrome alloy wheels. They are highway terrain and all-terrain tire options also. We have the chrome LED bumper. We have lots of good facilities for the bed part, which is officially a 470 kilos, which is the payload capacity for the car, which I just mentioned for the tent and the canopy part of the vehicle. Right. We have the front parking sensors, rear parking sensors, which are good safety features. And despite being a dual cab vehicle, we have 7 airbags into it. Being, of course, an overlander, it's a 4x4 vehicle, and we have an electric slip differential into it, which can be turned into H4, L4, and of course H2, which is a rear-wheel drive into it. 700 mm water reading capacity, much required in the northern part for all the lake streams or jungle forest where you have the river beds to cross into. Of course, it can be modified with a snorkel from Vishal sir or a lift kit also. So the differential part, we have some images for the same. We have the downhill assist control for the safety again. And the engine is massive. We have a 2.8 turbo diesel engine, which is a 4-cylinder unit, standard as a rear-wheel drive, and it provides a massive 500 Newton meters of torque into the automatic variant. It's obviously a ladder frame chassis. Interiors will feel home to the Fortuner, but yeah, they are very luxurious, they are comfortable, and they are safe. Airbags, as I just mentioned, we have 18 touchscreen with the Android Auto and Apple CarPlay. We have the front and rear parking sensors. The good part is you have the luxury features of dual zone climate control. We have the AC vents in the rear part also, and we have a cooling compartment into it. This is the vehicle stability control. For more overlanding, you can keep a bicycle or have a canopy. We'll have some photographs of the accessories also in the next slide. Yeah, so these are the set of tents. We have a tire pressure monitoring system. We have a wireless charger, and so many customizations that can be added to the luxury part of it. So that is how we stand for high luxury, the Hilux. Next. I have some awesome photographs to share with you with the commercial part or with rather many mobility services what Toyota provides with the car. We have, there are good vehicles out of it. We have 5 years and 2,20,000 kilometer warranty, which can be extended, which is apart from the standard warranty which Toyota offers for. And we have the express maintenance service also. You can book an appointment at the service station and get your car serviced within 60 minutes. The connected car deck, of course, with the mobile app. And these are the photographs for the tent and the customizations. Next. Yeah. So we have developed few other vehicles for the other usages of the Hilux apart from overlanding. We are developing the vehicles for Government of India and of course the fire department. We have a mining vehicle, we have the construction vehicle for disaster management. We have named it as a rapid intervention. So that is basically a first responder vehicle in remote places where the big ICers or the trucks cannot move with the fire parts. We have the Hilux, which is very capable of pulling good load and the equipment to get the first rescue in terms of any disaster. So that is one vehicle. I have the photographs in the next slide. We have the banking cash vans and of course the mining part. So that is what we are developing in next few years. Yeah, a good holiday site in African and Australian jungle as well. So this is the photograph for that. It is a good pulling capacity. We have the towing hooks in the front and rear as well. Of course, the winch is added safety or a feature which you can go for. Yeah. So this is one with a closed canopy. I don't know how many of you would go for a lifestyle vehicle with a closed canopy, but we have that apart from the tent. Which can be opened in 2 parts like a Range Rover, and you can also extend the AC vents
and many more customizations with the aftermarket dealers and the accessories what we have tied for. These are the photographs of the much awaited or the Hilux which I like the most, and the guest which you recently spoke with, Mr. Uttam Sheth. These are the live photographs. He told that he's a new guy into the thing, but I learned a lot from him, and I used the photographs. It is the car which he's using right now, and these are the pictures from Adi Kalash, right, sir? Yeah. So it's his recent trip. And beautiful pictures. He has designed the car, and of course we can have the practical touch and feel of the vehicle as well. I have got two Hiluxes down the floor, and one of them is our test drive vehicle. Next please. Yeah, that indestructible Hilux with the canopy, the tent, the snorkel and everything. Yeah. So the higher altitude and the northern region is developing more things. Yeah. So this is from my side. This is my number. You can contact me anytime, and I can offer you a service and a test drive also at your doorstep. Please do let me know. Thank you for your time. हो जाएगा. I have a question. So, Yeah. somebody who's already looked at and experienced a Fortuner, payload के अलावा, what is different? मतलब, why is it better for overlanding than the Fortuner? So what you get is the practicality with the back part. Secondly, the suspension setup what you get. Fortuner, Suspension. yeah. So rear may we have a leaf spring suspension, which is better, for the loading capacity of the car. One more thing I would like to add: the wheelbase is longer. So in the rear seat, you find the dual cabs as this seat. What we have is a rear seat, right? That is one more thing which you will like for sure in a car like this car. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, Mr. Vikas Thakkar. Now, while we are still on the Hilux part, the last bit I would like to say is, before moving to India in December 2020 from UK, staying there for 20 years, Falguni and I, where we were staying in Harrow, just opposite our house, every day we used to see a red Hilux parked over there. हम रोज देखते थे उसको. एक सपना बना लिया था अपने दिमाग में कि जब भी मौका मिलेगा हम यही गाड़ी लेंगे. लेकिन unfortunately when we came over here, the Hilux was still not launched in India and we had to settle with another vehicle. So let's hope that अभी किसी ने कहा कितना कम जो भी मिलेगा वो दे देंगे तो हम Hilux ले लेंगे. So Harish ji, before you proceed, there's a small video on the Hilux. I'll just play. Yeah, please. Morning, Jen. So, what does my week look like? Let's see. Monday, you have back-to-back meetings. And then you head back to your favorite spot. Tuesday, you're on the 17th hole, so give it your best shot. Wednesday first half is FaceTime with Mr. Sinha. And second half is downtime with your friends. Thursday, you have a meeting in the mountains. And I have a feeling it might be a long one.
Friday is the big day, so don't forget to smile for the cameras. You always know how to make a grand entry. Toyota Hilux. Live a richer life. So, was it really thrilling or you didn't enjoy, guys? So, where are the claps? At one point, I felt as if Falguni and I both are in that vehicle, enjoying Monday to Friday or Monday to Sunday, whatever it is. So, Falguni, I'll buy a Hilux for you one day. So, yeah, now I remember everything what I say from the deep corner of my heart. So we move to the next speaker. Overlanding consists of people from a very young age to elderly people also, as you'll see in the video actually, which is going to come now. He is one of the youngest, knowledgeable, skilled overlander. So may I invite Mr. Dhruv North. मुझे देखना इसलिए पड़ा, he has changed his surname, so I thought, what is his surname actually? Dhruv North, and he's coming from the North India actually. So guys, before I go on the stage, I am a filmmaker by passion, so I made a small video. I request Sulaksh to play the video while I set up my camera. And I told him that if you need any artist, I am still available. ओवरलैंडिंग, पिछले कुछ सालों में ये शब्द आपने काफी बार सुना होगा। वैसे तो ओवरलैंडिंग वर्ड की काफी सारी डेफिनेशंस हैं, बट मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये एक व्हीकल सपोर्टेड सेल्फ रिलायंट एडवेंचर ट्रिप है। आप हर सुबह एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर जैसी जगह में उठते हो और एक स्लो एडवेंचर से भरी जिंदगी जीने का प्रयास करते हो। इस बीच आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग अपने जैसे सरफिरे लोग भी मिल जाते हैं और बस देखते ही देखते एक छोटा सा गांव सा बस जाता है। इंडिया में ओवरलैंडिंग काफी पॉपुलर हो चुका है, खासतौर पे पिछले कुछ सालों में। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जिसे हम ओवरलैंडिंग कहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। एक दिन मेरे हाथ ये किताब लगी और उस दिन से सब कुछ चेंज हो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ रोड टू काठमांडू, जैसे कॉमनली हिपी ट्रेल भी कहा जाता है। ये 60s और 70s के दशक की बात है, जब पहली बार वर्ल्ड विटनेस कर रहा था सबसे बड़ा काउंटर कल्चरल मूवमेंट। हिपी ट्रेल एक 10,000 किलोमीटर लंबा रूट था जो शुरू होता था यूरोप में और खत्म होता था काठमांडू नेपाल में। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी थी। इस जर्नी के लिए सबसे पॉपुलर व्हीकल था VW कॉम्बी। लोग इसको ब्यूटीफुल कलर्स में पेंट करते थे और निकल पड़ते थे वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी के लिए। ये जर्नी मोस्टली स्टार्ट होती थी लंदन में, उसके बाद नीदरलैंड, देन फ्रांस, देन स्विट्जरलैंड, देन इटली, देन इस्तांबुल, वेयर वेस्ट मीट्स ईस्ट। उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, then New Delhi, then Varanasi, and finally to Kathmandu, Nepal. Unfortunately, 1979 में सोवियत ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और हिपी ट्रेल हमेशा के लिए बंद हो गई। Even though इंडिया में ओवरलैंडिंग हमेशा से होती रही है, बट एज अ कम्युनिटी इस कल्चर ने दिसंबर 2021 में जन्म लिया। हम लगभग 17 फैमिलीज अपनी अपनी सेल्फ सफिशिएंट व्हीकल्स में सवार होकर मध्य प्रदेश पहुंचे और वहां से स्टार्ट हुआ एक रिपल इफेक्ट। जहां 2021 में 50 से भी कम ओवरलैंडिंग व्हीकल्स इंडिया में मौजूद थे, आज 2023 में ये नंबर 500 से भी ऊपर है। ओवरऑल इंडिया का ओवरलैंडिंग फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आने वाले समय में ये आम इंसान के जीवन शैली का हिस्सा भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और दुनिया के ओवरलैंडिंग कल्चर की एक ब्रीफ हिस्ट्री।
वैसे तो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे ओवरलैंडर्स ही हैं और इस कल्चर से कनेक्टेड हैं, बट आई थॉट दिस इज एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस टू रिलेट टू हम लोग कहाँ से आए हैं और कर क्या रहे हैं. सो आज के थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग हियर एवरीवन. एंड माय नेम इज ध्रुव नॉर्थ. आई एम पॉपुलरली नोन एज फर्स्ट इंडियन कैंपर. आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे एंड बहुत सारा प्यार दिया है. A lot of people out here we've met multiple times before, but today I am going to cover a different topic altogether. So आज मैं cover करने वाला हूँ practicality of caravanning in India और practicality of overlanding in India, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वो अपने vehicles build करते हैं और वो गलत build कर देते हैं. उनकी requirements के साथ जो उनका vehicle होता है वो match नहीं करता. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हम लोग करने क्या वाले हैं. अब ये जो आपको मैंने वीडियो दिखाया 2021 में, उस टाइम पे काफी सारे यूट्यूबर्स ने हम लोगों को कवर किया और कवर करने के बाद एक रिपल इफेक्ट आया जिसकी मैंने बात की थी. उस रिपल इफेक्ट की वजह से हुआ क्या है कि आज ऑलमोस्ट एवरी डे आई गेट 10 to 12 ईमेल्स एंड आई एम वन ऑफ द पर्सन. ओवरऑल हो गया है काफी सारे लोग ये मूवमेंट ज्वाइन कर रहे हैं ऑन अ एवरीडे बेसिस, पर उन्हें पता नहीं होता कि उनको चाहिए क्या. वो पहले दिन में ही बहुत बड़ा सा व्हीकल बना लेते हैं. 6 months डाउन द लाइन उनका व्हीकल खड़ा रहता है और वो दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू बायर फॉर दैट व्हीकल. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, पहला क्वेश्चन उठता है कि आपको अपने लिए करना क्या है. व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड? इफ यू वांट टू स्टार्ट ओवरलैंडिंग, हाउ शुड यू स्टार्ट? सो मेरा पहला रिकमेंडेशन है, आपके पास जो भी गाड़ी है, आपके पास ऑल्टो है तो आप ऑल्टो से स्टार्ट करो, आपके पास स्विफ्ट है तो आप स्विफ्ट से स्टार्ट करो, आपके पास फॉर्च्यूनर है तो फॉर्च्यूनर से, और हाइलक्स है तो हाइलक्स से. आपके पास जो गाड़ी है आप उसी से स्टार्ट करो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू गो टू डीकैथलॉन, बाय अ टेंट एंड स्टार्ट विद द ग्राउंड कैंपिंग. अगर आप ग्राउंड कैंपिंग पे सेफ नहीं फील करते तो यू कैन immediately start with putting up a bed inside your vehicle and meeting like-minded people, starting your overlanding journey like that. धीरे धीरे जब आपको अच्छा इसको करने में आपका खर्चा लेस देन 50,000 रुपए आएगा. इट्स अ सेफ बेट. लेट्स से यू डोंट एंजॉय ओवरलैंडिंग, आपको ज्यादा कुछ लूज करने के लिए है नहीं. Next step is putting up a RTT. So let's say you realize that आपने overlanding करी, आपने अपना टेंट में करा, जो भी कुछ किया, उसके बाद you realize that you want to upgrade. You can put a RTT. You can contact Sulaksh, and there are multiple vendors in the country who will give you a RTT. आप RTT में अपनी overlanding start कर सकते हैं. That is the second step. उसके बाद जब आप confident feel करें कि आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, you can then switch to a vehicle like a Hilux or a Force Traveler or something like that. And start living completely. So by now you would know कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. So when I was building my first caravan, मैंने उसमें इतना कुछ डाल दिया था जिसमें से 70% चीजें मैंने आज तक कभी यूज नहीं करी. And I think this is a common experience with a lot of other overlanders. हम लोग इतना कुछ कर देते हैं कि क्योंकि हम देखते हैं वेस्ट के जो वीडियोस हैं, जो वेस्ट में लोग कर रहे हैं, they are full fledged. उनके पास सब कुछ होता है. But in our case हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम एक इंडिया जैसी ज्योग्राफी में है जहाँ पे ना कैरावैन पार्क्स हैं, यहाँ पे कोई स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है. साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट है अभी उनके एंड से काफी पुश नहीं मिल रहा है. तो इवेंचुअली वी हैव टू मैप आवर रिक्वायरमेंट्स विद द करंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी हैव. तो इवेंचुअली जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक बड़ी गाड़ी की तरफ मूव करना है और कैरावैन बिल्ड करना है, एंड आई एम मोर ऑफ अ कैरावैन गाय, सो आई विल टॉक मोर अबाउट कैरावैन. तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि कैरावैन बिल्ड करना है, आपके पास दो कैटेगरीज खुल जाती है. कैटेगरी 1 होती है जिसमें आप मोनोबसेस की बात करते हैं, जहां पे फोर्स ट्रैवलर इज द biggest player in India. I mean, you can go for a ladder chassis frame as well, but there are a lot of regulations around it which do not allow private registration. So Force Traveler is the only ladder chassis platform in India right now which can allow you to build a caravan and still register it as a caravan in certain states. So that is the number one vehicle in terms of when you want to build a mono bus chassis. And there is a new edition which is called Urbania. Urbania, if you haven't tried it, I recommend you guys to go take a test drive. You would love the vehicle, except few things, but overall it's a great vehicle. Second category में हमारे आ जाते हैं pickup trucks. Pickup trucks में Toyota is here, so I'm gonna start with Toyota first. So Hilux is a very capable platform. I drove Hilux first in Nepal in 2017, and I was blown away. The experience was incredible. So Hilux is one of the platforms. Second is Isuzu D-Max V-Cross. This is the second platform. If you don't have a lot of budget, we can, or if you don't want to invest a lot, you can stick to vehicles like Mahindra Bolero pickup, or you can think about getting a Tata Yodha, like Prashant Bhai did some time ago.
And all of these vehicles come with a lot of power. They would ensure that these vehicles will take you to every place where you want to go. साथ ही साथ इसमें आप ना बहुत सारे customizations कर सकते हो. I'll not go into the details of customization. Those have been covered already. But these are the two categories which I see flourishing in the country in coming years. इसके बाद अगला जो मैं टॉपिक आपके साथ कवर करने वाला हूँ वो है प्लानिंग. So guys, when you start building a caravan or when you start building a overlander, I recommend you to invest time in planning. You have to know what is it that you're trying to build, because एक बार व्हीकल बनने के बाद उसको वापस अनडन करना और फिर रीडू करना, it's a very expensive affair. And not only it exhausts your finances, but it also exhausts you mentally. It's like building a house. एक caravan बनाना या overlander बनाना, it's like building a house. There are emotions involved. So when there are emotions involved, if you have to undo something and redo, it is very exhausting. It's mentally and financially exhausting. So I recommend that before you make your first move, you go ahead and invest time in planning. Talk to experts. Talk to people who have already built it. There are few major things which you should be aware of. Number one is, how are you going to manage your electricity? Because when you're off grid, जब आप लोग multiple days की वो landing पे जाते हो, आपको electricity की जरूरत पड़ती है. क्या आपको सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा, टॉक टू एक्सपर्ट्स. इसके बाद वाटर मैनेजमेंट, आपको पानी की भी जरूरत पड़ेगी. इसके बाद होता है आपको सोओगे कैसे, बैठोगे कैसे, खाओगे कैसे. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हैव टू बी built in before you go ahead and start building your overlanding rig. Next factor is, where are you building your rig? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एवरी डे आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल हु से कि यार मैंने गाड़ी यहाँ पे दे दी और अब ये गलती हो गई है. तो एक कहावत है नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर है, वो है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. तो काफी टाइम क्या होता है, हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में वी गो टू सर्टेन वेंडर्स जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, ज्योग्राफी नहीं होती, एंड देन वी एंड अप रियलाइजिंग कि अब इसको मुझे दूसरे वेंडर के पास लेके जाना है. सो आई रेकमेंड दैट यू चूज योर वेंडर वेरी केयरफुली. टेक द रिव्यू फ्रॉम पीपल हु हैव बीन देयर, जिन्होंने काम करवाया है, और कोशिश करो कि, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टेंट आता है डिकैथलॉन का. इफ यू लुक एट दैट टेंट, आप उसकी सिलाई देखोगे, उसके ऊपर एक रबराइज्ड कोटिंग होती है व्हिच डज नॉट अलाउ मॉइस्चर टू सीप इन. वहीं अगर आप एक लोकल टेंट को देखते हो, देयर आर पीपल दिल्ली में जो हर गली कुचे में टेंट्स बना रहे हैं, आप उनका टेंट देखोगे वैसा ही दिखता है, बट रबराइज्ड कोटिंग नहीं है. द ओनली डिफरेंस, एंड आज जब आप वापस जाओगे जिनके पास टेंट है, आप जब देखोगे तो आप फिगर आउट करोगे कि एक बहुत ही पतली सी लेयर है. वो करता है क्या, पानी नहीं आने देता. सो लेट्स से यू आर कैंपिंग इन द रेन, और योर एक्सपीरियंस कैन बी टोटली, it could be a disaster or it could be amazing based on what kind of tent you are using. So what I'm trying to say is, when you choose a vendor, make sure that the vendor comes with experience, he knows what he's doing, and वो सिर्फ लोहा नहीं पीट रहा. Like I tell this to everybody कि लोहा पीटने वालों के पास नहीं जाना. We have to understand, these are not the buses, these are not ambulances, these are caravans. You're going to stay inside, you're going to live inside. It has to be made as per your requirements, as per the convenience. Next that I want to cover is my dreams about. I'm one of the guys who's always very excited when it comes to overlanding and caravanning. Having built, मैंने 2-3 गाड़ियां अभी तक build करी हैं अपने लिए personally. अब मैं काफी बार ना परेशान हो जाता हूँ based on certain things. Number one, इंडिया में caravan parks नहीं है. So back in 2020, I started a small startup. It was called Troop Stop. So Troop Stop was a company which tied up with multiple hotel owners, property owners across the country. और मेरा गोल ये था कि जैसे यूएस में मैं किसी भी कैरावन पार्क में जाके गाड़ी खड़ी कर देता था और I used to pay them some money. तो गोल was that इनके साथ में टाई अप करके we would start the caravan parks. छोटे-छोटे से 5-5, 6-6 गाड़ियों के caravan parks build करेंगे, और it would allow people to park safely. You will get water, you will get electricity, you will get a dumping station where you can dispose your black water. Along with that, you will get Wi-Fi. So you have all those amenities. You can park your vehicle and do whatever you want to do there. Unfortunately, the startup did not take off. I was expecting a lot of help from government, which did not come. But suddenly in 2021, government started an initiative called Caravan Park Policy. There was a Caravan Park Policy which was launched. It requires a lot of iteration right now. But I see that in near future, by 2025-26, I'm expecting that government of India will pay some attention. And the reason of having this kind of an association and meetup is to ensure that our voice reach to government in the right way, and we can have caravan parks. Now, as per the policy currently, government is encouraging individuals by giving them subsidies to build caravan parks. Unfortunately, जो
अभी काउंट है, the number of people who are overlanding in the country, it's very less. So it's like chicken and egg theory. What came first? वो कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि हम गाड़ियां तब खरीदेंगे जब कैरावैन पार्क्स होंगे. गवर्नमेंट कह रही है कि आप गाड़ियां तो लाओ पहले. तो it's we are going round and round. I am hoping there would be some conclusion with this association and with the number of people who would be joining us in the current movement. I am assuming that by 25 or 26 we should have some caravan parks across the country. Number two, इस एसोसिएशन को फॉर्म करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था टू स्टार्ट स्टेट चैप्टर्स. हम लोगों का एक एनुअल ओवरलैंडिंग मीटअप होगा हर साल, शायद 2 हो जाए. अभी तक 1 होता रहा है, आने वाले टाइम में शायद 2 हो जाए. बिकॉज इंडिया इज अ हॉट कंट्री, तो यहाँ पे you have very limited places where you can gather together and have a very comfortable kind of a thing. So winters is primarily what we prefer for overlanding. तो आने वाले टाइम में what I expect is कि छोटे ग्रुप्स बन जाए, हर स्टेट पे ग्रुप्स बन जाए. And I'll give you an example. I belong from Dehradun, so I am from Dehradun. अब देहरादून में we started a small movement wherein we demarked 4 to 5 sites. 4 से 5 मैंने sites demark करी थी और वहाँ पे अलग-अलग लोगों के साथ overlanding करी है. Abhi, now that I am here in Ahmedabad, I know there are 4-5 people already camping in those sites without me being there. Anytime they get stuck, they can give me a call, or they can give call to other people around who are locals there, and still get all sort of support. So पानी मिल जाता है और जो भी amenities की जरूरत होती है वो आपको सब मिल जाती है, electricity मिल जाती है. So eventually, what I'm trying to say is the success or failure of our community would depend on how rapidly these state chapters are formed. So because all the people, आप लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, काफी सारे लोग different states से हैं. आने वाले समय में within a year's time we see a lot of state chapters happening wherein, let's say you are in Bangalore, you would have a community, you would have grounds, you would have places जहाँ पे आप overlanding कर सकते हो, जिसमें आपको government के support की जरूरत नहीं है, but these are self-sustained, self-reliant events. So that is the second dream that I have, that आने वाले time में, let's say I go to Kerala, I call up the pilot there and say, boss मुझे overlanding करनी है. वो बता दे, bro, I'm sending you the location, वहाँ चले जाओ, वो भैया से बात कर लो, वो बिजली भी देगा, पानी भी देगा, and you're all sorted, and I'm safe in that place. So that is the second goal. That is my second dream when I talk about our current association. Third, RTO regulations. So मुझे गाड़ी बनानी है और मैं चाहता हूँ कि वो कैरावैन रजिस्टर हो जाए. क्यों कैरावैन रजिस्टर हो जाए? ताकि कॉप्स मुझे, let's say I'm passing through Ahmedabad और मैं नहीं चाहता कि कोई बोले कि भैया इसमें क्या कर दिया आपने गाड़ी में, ये तो गाड़ी जैसे दिख नहीं रही है, ये तो उसमें बेड लगा दिया आपने, वॉशरूम बना दिया, दिखाओ पेपर कहाँ है जिसमें ये सपोर्टेड है. तो ऐसा होता नहीं है वैसे, जनरली मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, बट a lot of people are afraid that if I don't have the caravan written on the RC of my vehicle, तो उस केस में what is it, how exactly would they get harassed, कितना पैसा देना पड़ेगा निकलने के लिए उस सिचुएशन से. तो आने वाले टाइम में what I see is a protocol जिसको हम लोग सब फॉलो कर सकें. Under those guidelines we are able to create vehicles, and वो vehicles जहाँ भी मैं लेके जाऊँ, I don't have to fear कि मैं चंडीगढ़ नहीं लेके जा सकता क्योंकि सीज हो जाएगा. I don't have to be afraid कि मैं केरला नहीं लेके जा सकता क्योंकि cops उसकी लंबाई नापेंगे and they're going to harass me. तो eventually we see that आने वाले टाइम में we would be able to talk to government, and at least जो हम लोगों ने modifications करे हैं वो हमारे RC में endorse हो जाएंगे. Now talking about current scenario, एक बहुत बड़ा problem है. अगर आप अपनी गाड़ी पे RTT लगाते हो, a lot of people ask this question every day to Sulaksh and different people here who are selling RTTs, that अगर मैं RTT लगाता हूँ तो मेरा चालान तो नहीं होगा. Talking about our secretary Rajiv bhai had to pay a lot of times while coming to our previous overlanding meet क्योंकि उन्होंने carrier लगाया था अपनी छत पे. तो those things have to be inbuilt. So all of us here, all the members in the Overlanding Association, we want to make things very legal. हम लोग चाहते हैं कि आप हमें बताओ करना क्या है, how do we go about it, and we would do it so that you can approve the modifications, and हम लोग एक नॉर्मल जो जिंदगी जी लें. हमारे अंदर डर ना हो कि कल को इस वाले रास्ते से नहीं निकलना, वहां से निकलना है क्योंकि यहाँ पे कॉप्स होते हैं, वो वाला डर खत्म करना है. तो we see that there could be a third party organization which can approve the changes like it happens in US. US में क्या होता है, आप गाड़ी बनाओ, आप एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है whether it is compliant or non compliant, and then once it is compliant they issue you the RC. I think that is the kind of structure. और इसका 10 साल से कोई लेना देना नहीं है. अगर आपके पास डीजल व्हीकल है, I don't want to get into those arguments right now, but what I'm trying to say is this has to be a seamless process जहाँ पे somebody who wants to start overlanding can start overlanding without putting in much of effort into the regulations and stuff, and without driving, of course.
Last but not the least, I want to talk about why should ये तो बात हो गई हम कर क्या रहे हैं कैसे कर रहे हैं why should you overland, and this is the last piece that I want to cover. So if you track the history of humankind, we are hunter gatherers. Sanjay bhai would agree. We are hunter gatherers. हमारा जो DNA है it is that only. We were connected with nature. फिर हम लोगों ने घर बना लिए, हम घर के अंदर पहुंच गए और फसलें बाहर पहुंच गई. तो मैंने एक हार्वर्ड की स्टडी पढ़ी थी कुछ टाइम पहले. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू रीड आउट. हार्वर्ड का जो रिसर्च पेपर था वो कहता है दैट द टाइम इन नेचर, द टाइम स्पेंट इन नेचर इज एन एंटीडोट फॉर स्ट्रेस. इट कैन लोअर ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस हार्मोन लेवल. इट कैन रिड्यूस नर्वस सिस्टम अराउजल, एनहांस इम्यून सिस्टम फंक्शन, रिड्यूस एंजाइटी एंड इंप्रूव मूड. अब आप सबको पता है कि ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ काम करेंगे, ऑल ऑफ दिस व्हेन दिस वुड हैपन, दिस वुड इवेंचुअली लीड टू लॉन्जिविटी. जो आपकी एज अभी हम लोग देख रहे हैं, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड द कंट्री इज डिक्रीजिंग विद एवरी डेकेड. सो विद पीपल मूविंग आउट इन द नेचर, you can expect the average lifespan probably could go up. And when you're outside, you're generally happy. That's what I have figured out. So with this, I would like to thank each one of you for being here and giving me this opportunity to speak. Thank you so much. शुक्रिया ध्रुव जी. शायद आप लोग सोचेंगे कि मैंने सडनली इंग्लिश से हिंदी में क्यों बदलाव कर दिया बोलने में. जरूरी है, हमारी भाषा है, हमें गौरव है हिंदी के ऊपर. हालांकि हम तो गुजराती है, लेकिन हिंदी में कभी कभी गुजराती का कोई वर्ड आ जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा. जैसे ध्रुव जी ने कहा कि ओवरलैंडिंग के लिए पानी, खाना, लू फैसिलिटीज की जरूरत है, वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेडियो. रेडियो भी रखना जरूरी है, क्योंकि आप जब ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत इजीली. एंड विथ अस, हमारे साथ आज हमारे एक अजीज दोस्त मलव शाह भी हाजिर है, जो रेडियो के ऊपर कुछ हमें ज्ञान देंगे या हमें जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी करेंगे. सो मलव शाह, आप प्लीज स्टेज पे आ जाइए. Good afternoon, boys and girls. Sunday afternoon. I'm going to bother you, but not bore you. So stay with me. May I request you? Yes, speak in Hindi. Oh, Hindi. Okay, please. Okay. मेरा हिंदी ध्रुव भाई जैसा अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ. As we are into a very nascent stage, हम बहुत ही शुरुआत की स्टेज में ओवरलैंडिंग के लिए इंडिया को प्रिपेयर कर रहे हैं. मैं जो हूँ वो कम्युनिकेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी इतना nascent स्टेज में है. It's not so developed, and there are quite a lot of myths. काफी कुछ गलत फहमी है जिसके हिसाब से हम जो है वो भी यूज नहीं कर सकते. So I'm also welcoming my colleague over here, Badresh bhai, and he's going to help me out on some live or practical demo. We are trying to set up a station. So my name is Malav Shah. I am 55 years of age. My daughter got married in COVID. तो मैं empty nester हूँ और मैं और मेरी wife overlanding शुरू करने जा रहे हैं. हालांकि वो Harish bhai knows it very well. So I'm trying to convince her. But yes, we are planning to embrace that overlanding lifestyle. And as quite a few of us have suggested, कि शुरुआत जो है वो baby steps से करते हैं. पूरा rig बना. I was having that top down approach. पर फिर जाके कुछ दिमाग में आया इन लोगों से मिलके कि नहीं, you should go and have baby steps. जो है उसमें से शुरू करो. और मेरी एक Volkswagen Tiguan है, उसको मैं
कैंपर वैन में कन्वर्ट करना जा रहा हूँ. So that is what I'm trying to do. I'm also an electronics engineer by qualification. मैं पढ़ा हूँ और I'm also an ham. Now what is ham? You know, अक्सर आपने कोई लोगों को देखा होगा ऐसा कुछ लेके घूमते हुए. So this is a ham radio, and the quality of this ham radio is that we are not dependent upon anything. जैसे रेफरेंस हमें यहाँ पे ओवरलैंडिंग में कैसे आया कि we need some kind of communications and we are dependent. So that is the reason why I would like to bring up this issue of ham radio. ये एक रेगुलेटेड सर्विस है, किसी को नहीं दिया जाता है, तो आपको इसके लिए एक एग्जाम देनी पड़ती है. छोटी सी एग्जाम है, इजी एग्जाम है, कोई हाई-फाई नहीं है, पर एक एग्जाम देने से आपको एक लाइसेंस मिलता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है. दिस इज माय लाइसेंस, और ये लाइसेंस के अंदर आपका एक कॉल साइन लिखा रहता है. दिस इज माय कॉल साइन. सो इन हेम फ्रेटर्निटी माय नेम, मेरा नाम मालव शाह नहीं है, मेरा नाम VU3MKH है, विक्टर यूनिफॉर्म नंबर 3 माइक किलो होटल. मेरा कलीग है भद्रेश भाई, उनका कॉल साइन है VU3PJI, VU3 पापा जूलियट इंडिया. So wherever in the world we are, when I say I am VU3 Mike Kilo Hotel, my identity is established. Similarly, his identity is established. So for overlanding, we go to remote place. हमको जाना ही है, वही तो overlanding का मतलब है कि we are not pitching our rig in the outskirts of a city, जहाँ all the facilities are available, including power, including communication network, everything. So why we need to bank upon? Why do we need communication? जैसे चिराग भाई है, वो कहीं चले गए 20 दिन, 1 महीना, उनको पता चला कि यार मेरा कलीग है, वो कुछ 20-25 किलोमीटर कहीं यहाँ पे ही कैंपिंग कर रहा है. But how will he get in touch with him? Probably there is no network. So what will he do? Nothing. We need to communicate with our colleagues. एक ग्रुप जा रहा है, 20-25-30 कैरावन्स जा रही है साथ में, तो फर्स्ट कहीं दूर छूट गई, आगे छूट गई, पीछे छूट गई. हाउ डू वी कम्युनिकेट बिटवीन द 2 कैंपर वैन्स? इसके लिए चाहिए. दूसरा है ब्रेकडाउन या पर्सनल सेफ्टी. कहीं कुछ अपना रिग बिगड़ गया, अपना व्हीकल बिगड़ गया, एंड वी नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, एंड वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद पीपल आउट देयर. थर्ड इज डिजास्टर. अभी नॉर्थ के अंदर कहीं कुछ लैंडस्लाइड्स हुई है, कुछ फ्लड हुए हैं, तो अगर आप वहां पे ओवरलैंडिंग कर रहे हो और फंस गए, so how to get out of that? For all these things, communication becomes a very integral part. So अभी क्या हो रहा था, we are dependent upon mobile and internet. कुछ भी है तो हम मोबाइल या इंटरनेट से कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और इसी से कम्युनिकेशन मिलता है. अगर नेटवर्क नहीं हुआ, if there is a network issue, कुछ नहीं होगा. We cannot communicate. We are on our own and we have to find our way. जैसे आप 3 दिन रुके और वहां पे कुछ नहीं कर सके, you cannot call anybody. So in those kind of situations, अगर आप ऐसे फंस जाते हैं तो क्या करेंगे? दूसरा है कि we go based on citizen band radio या GMRS, जो हमें मिलता है लाइसेंस के बिना. उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन कर लो, you can have these kind of radios available to you and you can communicate. But the problem there is it is not sufficient enough for our needs. उसके अंदर channels fix रहते हैं, उसके अंदर bands fix रहते हैं, उसका power output fix रहता है, उसका range limited रहता है. So जिस लिए हमें रेडियो चाहिए, probably वो काम ये जो है वो नहीं करता है. उसके ऊपर का जो लेवल है वो सैटेलाइट रेडियो है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. सो उसमें भी नहीं जाना है. देयर इज वन सॉल्यूशन व्हिच इज इन बिटवीन,
and that is ham radio. So ham is the solution. You give an exam, एक एग्जाम छोटी सी दे दो और आपका एक लाइसेंस आ जाता है. वो लाइसेंस से ये सब जो इक्विपमेंट्स है वो आप ऑफिशियली ओन कर सकते हो, आप उसको ऑफिशियली ऑपरेट कर सकते हो. So that gives you a liberty, and this equipments आपको काफी कुछ हेल्प करते हैं, काफी कुछ it opens up quite a number of possibilities. We are also, even it is so reliable, it is so, ये इतना डिपेंडेंट है कि ऑथोरिटीज हमें डिजास्टर के लिए बुलाते हैं. जैसे अभी बिपरजॉय आया था, तो ये हमारे कलीग्स है गांधीनगर के, वो they set up a station to help the authorities. So it helps in all sorts of issues, और वो communication establish करके two-way messages दे सकते हैं. So it is illegal to have these kind of things, but a small license. आप अगर फायर आर्म रखते हैं, लाइसेंस से रख सकते हैं, पर वो लाइसेंस होना जरूरी है. अगर नहीं है तो क्या है? That is the criminal offense comes with this. You have this, but you don't have license, you are as good as a terrorist. Yes, sir. जितने भी fellow passengers होते हैं, जी, सबके पास CB रेडियो तो होता है. जी. तो CB रेडियो के साथ क्या कनेक्ट कर पाते हैं? नहीं, CB रेडियो अलग होता है, ये इससे कनेक्ट नहीं होता है, but this is a larger umbrella to CB. यहां से जो जाता है वो CB में आएगा ही आएगा, पक्का नहीं है. वहां जो है वो इसी में आएगा. So that is why I'm saying that this opens up quite a lot of other avenues. So it is good to have a license and officially own and operate this kind of equipment, wherein you have tremendous flexibility. Sir, ये कौन रेगुलेट करता है? तो यूनाइटेड नेशंस में ITU का एक अलग सा सेपरेट डिवीजन है, वो वर्ल्ड ओवर फ्रीक्वेंसीज, बैंड्स, वेवलेंथ, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एंड it lays down the norms. It is not very clear over here, but it is there on internet and Wikipedia. So this is the institute which controls all these things world over. इंडिया के अंदर ये हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एंड दे इश्यू द फ्रीक्वेंसी मैप्स कि कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी पे कौन क्या कुछ कर सकता है, कितने वॉट पावर में कर सकता है, और अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो गैजेट के हिसाब से वो अपडेट करते रहते हैं. सो दिस इज द रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है. उसके अंदर से एक छोटा वाला पार्ट निकल के आता है रेडियो के अंदर. उसके अंदर भी काफी कुछ सेक्शंस रहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, एंड हर एक फ्रीक्वेंसी के अंदर भी ऐसे बैंड्स रहते हैं. एक छोटा सा उसका इलैबोरेट किया हुआ है कि ये वाला एविएशन को दिया है, ये वाला मिलिट्री को दिया है, ये वाला रेलवेज को दिया है, ये वाला कॉर्पोरेट्स को दिया है. No, there are various sections. So the small ones which are in green are available to amateur radio, जो की फ्रीक्वेंसी हम इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, हम सेट भी कर सकते हैं, उसमें ऑपरेट भी कर सकते हैं. HF, VHF और UHF हमारे काम की चीज है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो HF के सिग्नल्स जाते हैं आयोनोस्फीयर पे, वापस आते हैं. तो होता क्या है कि वो स्किप में आएगा, ये वाला जो हो गया वो स्किप जोन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल जाएगा ही नहीं. ओके, वो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगा, बाउंस होके जाएगा, इट विल गो ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब. ऐसा होगा कि यहां से जाएगा, घूमता 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 वापस गांधीनगर में आएगा, पर डायरेक्ट गांधीनगर नहीं जाएगा, क्योंकि आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके सीधा तुरंत नहीं आएगा, वो जाएगा बड़ौदा या हिम्मतनगर, बट बड़ौदा और हिम्मतनगर के बीच में जो आएगा वो स्किप जोन आ जाएगा. Now for overlanders what we need is a short distance communications also, for which VHF and UHF are surface waves. The wave, radio waves which travel, they travel on the surface.
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ये जो वाला जो ग्रीन दिख रहा है, बियॉन्ड विच देयर इज अ अर्थ कर्वेचर, तो ये लाइन ऑफ साइट से आगे नहीं जाएगा. The higher you are, the longer the wave will go. The shorter you are, the shorter distance it will cover. अक्सर ऐसा हो जाता है कि गाड़ी में मैं बैठा बैठा बात कर रहा हूँ, 10वीं गाड़ी में आवाज ही नहीं जा रही. So why is it so? Multiple factors, but one of the factors is that was wave का traveling का characteristics ही नहीं है, वो वहां से आगे जाएगा ही नहीं. So that is one of the reasons. HF, VHF, UHF के अंदर यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि along with amateur radio there are so many things which are happening in the band. तो जो citizen band आपने जो क्वेश्चन किया था, तो citizen band इसमें से एक है, but amateur can do quite a lot of things. Now ये HF की रिग्स है, अगर हम देखे जाए तो ये प्रोजेक्टर की साइज की ये सब होती है और उसका एंटेना और सेटअप ऐसा रहता है. ये वाली से छोटी सी कार है और उसका एक पोल होता है और उस पे इन्वर्टेड वी का एंटेना रहता है, इसमें भी ऐसा रहता है. सो इट इज क्वाइट कंबरसम टू सेट अप ऑल दीस थिंग्स. हालांकि हम कर सकते हैं, दिस इज डूएबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, बट अगर आपका 3 दिन 4 दिन का स्टे है तो इट इज वर्थ डूइंग, अदरवाइज नो. ये वाला जो है वो VHF और UHF वाले रिग्स है, उसके अंदर ये सब जो है वो हैंडी है. इसमें से एक वाला जो मैंने आपको बताया ये, दूसरा वाला यहाँ पे जो है, दिस इज द बेस रेडियो ऑफ VHF HF ओनली. तो अगर कार के अंदर आपको इंस्टॉल करना है तो ये लेके बैठ सकते हैं, या तो ये वाला ब्लैक नहीं QIT, हाँ ये तो एक छोटा सा रेडियो रहता है and it operates on 12 volt. It operates on auxiliary battery also. Okay, so there is no dependency on power. One, it operates on battery. हम सोलर पैनल भी ले जाते हैं और सोलर पावर से भी, पैनल से भी इसको ऑपरेट करते हैं. It makes also an interesting hobby of a campfire. So that is one more thing. It is not only you communicating it; you are communicating with the world. So there are so many people at that point in time in the world so also communicating, and there are events where अगर कोई सेल करते हुए अलास्का गया तो वहां उसने एक सेटअप किया स्टेशन और इससे आप कम्युनिकेट करते हो. इट्स अ वेरी 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 यूनिक थिंग, वन ऑफ ए काइंड, शायद वैसा दूसरी बार ना भी हो. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉबी विच यू कैन परस्यू व्हाइल यू आर ऑन अ ओवरलैंडिंग ट्रिप. One second. There is also one more advantage कि अभी डिजिटल एरा चल रहा है, तो यू कैन कंबाइन रेडियो फ्रीक्वेंसी विद डिजिटल. तो हाफ हो जाएगा रेडियो में, हाफ चलेगा इंटरनेट से, फिर वापस वो कन्वर्ट होगा. तो इवन विद दिस यू कैन टॉक टू समबडी इन यूके, बिकॉज यहाँ का सिग्नल शायद वहां तक डायरेक्ट नहीं जाएगा, पर यहाँ का सिग्नल जाएगा एक रिपीटर पे, मुश्किल से इंडिया को छोड़ेगा, बट वहां से वो चला जाएगा इंटरनेट, वो जहां के जाएगा यूपे, वहीं wherever in the world, वहां से वापस वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होगा. And there would be so many people all around the world talking to you while you are out in the bush doing overlanding, and it is possible with a very small equipment like this. So this is what we did in Eder. This is me and my friend. This is the antenna for the satellite. We actually used to communicate with satellites. There was a competition. We used to maintain a log there, write down all the kind of communications we used to do. So this is solar panel. This is our battery, normal automobile battery, and we used to operate this rig. And it happens anywhere. Okay. Next one. Yes. This was very recent. This was in February 2020, just before COVID. These are some hams which are doing world over. Like ये उनका आर्मी है, वो वहाँ पे canopy बना के he is having a station and establishing communication. ये पूरा campsite ही है, वहाँ पे उसने एक बनाया हुआ है अपना खुद का station. Again in the middle of the desert. ये वाला जो है वो HF का एंटेना है, ये वाला है VHF और बाजू में है UHF, and he is having a perfect setup as an overlander.
So this is one of the ways where you can keep connected with the world in the remotest possible area. Thank you very much. Any questions? Yes, please. So, as you said that you can have a hybrid communication wherein you transmit radio and it goes and enter into the internet so that whenever you can transmit. Can the reverse communication come? Of course, it is a two-way communication. So somebody in my home, if somebody wants to send me a message, she may not have, or he or she may not have kind of radio set. But if she sends some message to me, can I be receiving it on my radio set? Any person operating here needs a license. What? No, I'm talking so. This is No. What I'm coming to is your wife would need a license to do this. But this is what I want to know. The other thing. Through the internet, can I communicate to a radio? Yes. DMR. Digital mobile radio and software defined radio. DMR and SDR are the two technologies wherein you don't even need a radio, even you can do this from your laptop. But for that, do you need a radio license? You need a license. You need a call sign. Because there is a protocol. Say, for example, if I'm talking to him, even right now, I'll have to give my call sign. There's a protocol. This DMR, can it communicate to the CB radio? CB radio works on very specific slot of frequency. Yeah, and they have those channels predefined. So they cannot tune in to all different frequencies. That particular frequency can. Yes, if I set the same frequency, this set can set any frequency in the spectrum. Say for example, in VHF it's 144 to 146. So any frequency in VHF, I can set it from my rig. Now say for example, a CB radio is tuned to 145.500. I can tune that. I can have a communication with CB. That is very much possible. But if I am on 145.550, sorry, CB cannot. The only the one thing I want to tell you is, even in your mobile, EcoLink, one application is there. With that app, yes, you can communicate to the others through internet, and at some particular point, वहाँ पर आपका एक रिपीटर लग गया होगा जहाँ तक इंटरनेट अवेलेबल है, और वहाँ से रेडियो कम्युनिकेशन हो जाएगा. तो इस तरह से आराम से हो जाएगा. सर, मेरा सवाल बहुत सिंपल, थोड़ा इतना सिंपल भी नहीं है. We can have a detailed discussion. Yeah. Yes, please. हो जाएगा. So one quick question. Let's say I have a Bofang UV 5R. This is Bofang UV 5R. Yeah. How do I increase the range or wattage? What? See, there are low power and high power, two different settings on this machine. So it operates on low power and high power. That is it. That is all you can set. High power in Baofeng 5R, UV5R is 5 watt. You cannot exceed more than 5 watt. Okay. There are various different antennas. So like this is a whip antenna. The antenna which comes to it is like a rubber ducky antenna. So that has a very low communication. You can increase, you can have a mag mount. We are having a mag mount installed there. So you can have a mag mount over your vehicle which gets fitted onto the roof, which has a magnet, and it would not go away. Now this would increase the power as well as power in the sense not more than 5 watt, but it can increase the range of communication. So you can improve on your transmission lines, you can improve on your antenna, you can have the highest power output of your rig, but not beyond it. There is a limitation of the rig. Rig का जो limitation है उससे ज़्यादा power नहीं दे सकते. ये वाला जो base है उसके अंदर हम 25 watt कर सकते हैं. तो वो power supply से चलेगा, बैटरी से भी चलेगा, but उसमें 25 watt का highest है, तो वो 25 watt से ज़्यादा नहीं जाएगा. बाफर के बाद आपने अगर एम्पलीफायर लगा दिया, yes, आपका काम हो जाएगा. There has to be a linear amplifier or something sort of that, which can, but it has a limitation. Number two is नहीं पर वो ये अपने overlanding में नहीं होगा. Secondly, if I have to, so there are two things. One is transmitting. So I understand transmitting में you have to increase the power. What about receiving? How can I increase the receiving range? Or can I use a FM radio at a frequency which can... See, increase receiving के अंदर जो signal वहाँ से छूटता है, उसका signal strength आपके एंटेना में कहाँ आता है, वो important करता है.
अभी 1 वॉट के अंदर आप सैटेलाइट से भी बात कर सकते हो, बट 1 वॉट से मैं यहाँ पे गली के नुक्कड़ तक बात नहीं कर सकता. So it depends upon so many things. Line of sight, your radiating power, your angle. Say for example, I have an antenna which is a directional antenna. वो सीधा उस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा. ये ओमनी डायरेक्शन है, पूरा डायरेक्शन में सिग्नल्स देता है. So the strength gets divided. There are various factors which involves in it. Receiving के अंदर सिग्नल आपके एंटेना तक आना चाहिए. You don't need any watt. You don't need any power. Transmission के लिए you need power. रिसीविंग में आपका एंटेना अच्छा, जितना अच्छा एंटेना होगा and low loss cable, the cable which connects to your antenna to your rig, अगर उसमें लॉस है वो भी प्रॉब्लम करेगा. yes sir. अभी लाइक सिर्फ ओवरलैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हैविंग अ ह्यूज रेंज इज बेनिफिशियल. इमरजेंसी डिस्कशंस के लिए, रिकवरी कहीं फंस गए हैं ना, इमरजेंसी कम्युनिकेशंस के लिए. अभी क्या है, इफ आई वांट टू गेट इनटू दिस, मुझे लाइसेंस लेना है, इक्विपमेंट लेना है, समझना है, सीखना है, करना, और थोड़ा प्रोटोकॉल जो है वो मे बी मेरे जैसे लेमैन के लिए बड़ा इजी नहीं है फॉलो करना. मेरे को समझना पड़ेगा कोई प्रोटोकॉल है, नाम लेना है अपना, फिर बात करनी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें मैं इन्वेस्ट करूं, सब करूं अपने लिए, क्या ये फ्यूचर प्रूफ है? क्योंकि अभी मैं क्या सुन रहा हूं कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन अ टेक्नोलॉजी जो मे बी नेक्स्ट 1 साल में हमारे पास होगी कि जब बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होगा, जीरो सिग्नल होंगे, इवन देन द फोन विल बी एबल टू सेंड अ इमरजेंसी सिग्नल या मैसेज टू पीपल अराउंड, मतलब जिसको भी हमें भेजना है, एंड वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. मतलब मुझे कुछ नया लाइसेंस नहीं लेना, मेरे हाथ में वो मोबाइल होगा और मैं उसके थ्रू इमरजेंसी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ. तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है तो इज दिस फ्यूचर प्रूफ? सर आज की तारीख में, अगर आज की तारीख में आपको मैं आंसर करूं तो डिजास्टर वाले हमें अभी भी बुला रहे हैं. सो नथिंग बीट्स दिस एज ऑफ नाउ. टुमारो इफ समथिंग न्यू कम्स इन, वी कैन नॉट अश्योर और से एनीथिंग अबाउट इट. आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इससे रिलायबल दूसरा कम्युनिकेशन का टेक्निक, और लाइसेंस भी जो है वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट 70% इज द कॉमन सेंस. अगर एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए क्या प्राइस रेंज होगा अगर मेरे को लाइसेंस लेना है और एक इक्विपमेंट लेना है? लाइसेंस के लिए कुछ कॉस्ट नहीं लगता है, कुछ 50 रुपया 100 रुपये एग्जामिनेशन के अंदर बैठना है. एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीस आपका फॉर्म का फी, ये जो फीस है, और ये जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो 2500 से लेके स्काई इज द लिमिट. तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है नहीं. और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये बद्रेश भाई ने पावर सप्लाई बनाया है वो जुगाड़ है. सो मोस्ट ऑफ दी हैम्स आर होम ब्रू, हम खुद बनाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम खुद बनाते हैं. तो ये वाला जो पावर सप्लाई है कहीं से निकाला हुआ है, और सर्वर का पावर सप्लाई कंप्यूटर का मैंने यूज कर लिया, उसको मॉडिफाई कर. तो यू नो इट्स मोर ऑफ इट इज लाइक अ जुगाड़. और ये जो आप बोल रहे हो, अगर टावर ही नहीं है, सेल का आप अगर स्ट्रक्चर देखने जाओ, जहाँ एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल वहाँ, अगर पावर नहीं है, आपके पास सर्विस नहीं है, तो कहाँ से आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा? राइट. सो ऑनलाइन ऐसा चल रहा है. कुछ टाइम पहले ये अली एक्सप्रेस वगैरह पे, तो आई ऑर्डर्ड अ सेल फोन, इट केम विद अ इनबिल्ट हैम रेडियो. That is different thing. That is different thing. वो आता है, इक्विपमेंट आता है. So अभी एप्पल और ये सैमसंग मोबाइल में नहीं आएगा, बस ये वो सीधा सैटेलाइट को सिग्नल भेज के दे विल ट्रांसमिट द मैसेज और व्हाटएवर. That is already available. अच्छा ऑलरेडी $200, and communication satellite. It's a short सैटेलाइट की कोई सर्विस हमने नहीं दिया है. through your phone. Any more questions? You can contact me on Shah Sojan and they are on Insta, Facebook, YouTube. हालांकि overlanding शुरू हो रहा है अभी मेरा, तो I'm not very active, but please feel free to get in touch with me in case if you need any information on hams or communications. Thank you very much. Thank you. आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. लोगों को बहुत प्रश्न थे, उत्साह था. तो अगर और कोई प्रश्न हो, जैसे इन्होंने कहा, तो मनोज जी का आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अहमदाबाद में ही रहते हैं, और सुबह इनको अगर गाठिया जलेबी खिला देंगे तो आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे.
आगे बढ़ते हुए मैं मल्लव भाई को ये कहूंगा कि आप और मैडम जल्दी ही ओवरलैंडिंग स्टार्ट कर दें। अब जैसे ध्रुव जी ने कहा कि ओवरलैंडिंग में कुछ चीजों की बहुत ही खास जरूरत होती है, जैसे पानी है, कुकिंग है, टॉयलेट फैसिलिटीज है, साथ में हमें टेंट की भी बहुत जरूरत पड़ती है। सोएंगे कहाँ हम? जब सोना ही अच्छा नहीं होगा तो बदन में दर्द होगा, नेक्स्ट डे आंखें जलने लगेगी, तो मजा नहीं आएगा, नेक्स्ट डे खराब हो जाएगा या ट्रैवलिंग में मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे साथ हमारे एक दोस्त, हमारे मित्र, हमारे ओवरलैंडिंग भाई सुलक्ष कौशिक भी साथ में है। उनको मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज के ऊपर, वो कुछ टेंट्स के बारे में बताएं और वो क्या करते हैं वो खुद बताए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुलक्ष कौशिक। मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ करंटली, और लकीली मैं दो तरीके से आज यहाँ अवेलेबल हूँ। एक तो ओवरलैंडिंग एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर की तरह, और नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड इज अ कंपनी जो मैं को ओन करता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आज मैं यहाँ एसोसिएटेड हूँ, आज आप लोगों के सामने हूँ। मेरी खुद की जो पर्सनल ओवरलैंडिंग जर्नी थी, दिस स्टार्टेड अराउंड 2016, ज्यादा पुराना नहीं किया मैंने ये सब स्टार्ट, बट 2016 में लगभग मेरी ओवरलैंडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी वाइफ के साथ, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले कंसिडर किया था कि क्या हम एक कैरावान लेके घूम सकते हैं इंडिया में। बट उस टाइम पर जो हमारी लाइफ सिचुएशन थी, वी वर फीलिंग कि एक कैरावान इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, so we were looking at alternatives उस टाइम पर। So मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आई रिमेम्बर्ड देयर वाज समथिंग कॉल्ड रूफटॉप टेंट। मतलब यहाँ से मेरी रिसर्च से, मैंने ओवरलैंडिंग शुरू भी नहीं करी थी, बट वो रिसर्च से मेरा काम शुरू हुआ। तो ओवरलैंडिंग के लिए रूफटॉप टेंट अवेलेबल है बाहर के मार्केट्स में, तो वो देखकर बस एक अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मैंने फर्स्ट टाइम उसको इंपोर्ट करा चाइना से, एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट। तो जब वो यूज करते करते समझ में आया कि फैमिली के साथ जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ हम कैंपिंग जा रहे हैं, कहीं दूसरे लोगों को भी पसंद आ रहा है, एंड दिस इज सर्विंग अ गुड पर्पस, सॉल्विंग सॉल्यूशन, इट्स अ सॉल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जिन लोगों के पास ऑलरेडी गाड़ी है, कोई मिड साइज एसयूवी है, फुल साइज एसयूवी है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन था। तो बहुत सारे लोग मुझे, जब मैं ट्रैवल करता था कहीं, तो लोग बोलते रहते थे कि हमें भी दिलवा दो, कहाँ से आपने लिया, कैसे लिया। सो तब नथिंग वाज लाइक सीरियस फ्रॉम माय एंड, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था बैंकिंग इंडस्ट्री में। बट देन कोविड हैपेंड और सबकी लाइफ यहाँ बहुत बदल गई। मैं कोविड से पहले, टू बी ऑनेस्ट, मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों को ये बहुत पसंद है। तो कोविड के टाइम पर एक डिसीजन लिया मैंने, जो मेरा एक फुल टाइम पेइंग जॉब था, आई क्विट दैट एंड आई फॉर्म दिस कंपनी नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड। सो दिस कंपनी हैज बीन लाइक the best decision I made ever. उसका reason है कि I get to meet people like you. I get to do what I enjoy a lot. और जो सब लोग कोट्स में बोलते रहते हैं ना, वो काम करना चाहिए जिसमें मजा आता है, तो मैं लिटरली वही कर रहा हूँ। तो उस कोट को मैं जी रहा हूँ अपनी लाइफ में। So now this was a brief about how I started. First of all, I'd like to thank this community for giving us moments जो कभी इमेजिन भी नहीं करते थे हम लोग कोविड से पहले कि इस तरीके का एक माहौल या कम्युनिटी होगी जिसमें हम लोग नई जगह को एक्सप्लोर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा और कुछ ऐसी यादें डेवलप होंगी जो हम कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं पाएंगे। सो दिस वाज वेरी लकी फॉर अस, सबसे पहले तो मेरे लिए और नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड दोनों के लिए, कि हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में पैदा हुए हैं। तो माउंटेन्स, ओशंस, लेक्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, सब कुछ हमें एक ही जगह मिल जाता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो हर तरीके का टेरेन बहुत इजीली, अप्रोचेबली अपने ही कंट्री के अंदर उनको मिल जाए एंजॉय करने के लिए। बट लकी फॉर अस, हम लोग भारत में रहते हैं और ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है हमारे लिए। हम बहुत इजीली ट्रैवल करके कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी एक्सपीरियंस करने के लिए। बट नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड का और इनफैक्ट मेरा पर्सनल
जो एक एंडेवर रहता है वो ये रहता है कि कम्युनिटी को मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हम लीड कर सकते हैं, बट कम्युनिटी को गाइड कर सकते हैं, जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन होता है, कि जब हम इन जगहों को विजिट करते हैं तो उसका सही तरीका क्या होता है। तो सही तरीका सिंपली यही है कि जिस भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं, यू शुड नॉट चेंज इट इन एनी वे पॉसिबल। अगर आप कहीं पहुंचे हैं, आपको वो जिस तरीके की लोकेशन मिली है जब आप पहुंचे हैं, जब आप वहां से जा रहे हैं, तो बस आप यादें लेके जाइए और कुछ छोड़ के वहां मत जाइए। सो एनी गार्बेज दैट यू क्रिएट या कुछ भी चेंज, आपने कुछ टेम्पररी चेंज लाया उस लोकेशन में, सो व्हेन यू एग्जिट प्लीज रिवर्ट इट बैक। दैट्स ऑल नोमैड एडवेंचर ओवरलैंड, या मैं कम्युनिटी को बोलूंगा करने के लिए। कमिंग डाउन टू व्हाट वी डू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड में my thought process and the products that we do, सबका thought process ये है कि when you use any of the products in your vehicle, we do not want you to change your vehicle permanently. तो चाहे आपके पास एक full fledged SUV है या loading truck है, आप जब हमारे products उसके साथ use करते हैं vehicle के साथ, it should be a completely sort of a temporary solution. So जब आप घर वापस आते हैं, you can remove our products from your vehicles और आपके vehicle वापस back to original हो जाएंगे to use for other things. So multi-use purpose एक ही vehicle हो जाएगा. So this will mean that you do not have to invest into a separate vehicle. जो vehicle आपके पास available है, आप उसी में हमारे products use करके you can go ahead and make it a temporary moving home for yourself, और आप इंडिया, भारत सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट अ वेरी ब्रीफ, मैं आपको सब चीजें वेबसाइट पे होती हैं अवेलेबल, मैं ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, बट द मेजर प्रोडक्ट्स दैट वी डू, वी स्टार्टेड ऑफ विद अ रूफटॉप टेंट, जो बेसिकली आपकी गाड़ी की छत पर आप फिक्स कर सकते हैं और आपको 8 घंटे 6 घंटे की कंफर्टेबल स्लीप मिल जाएगी। दैट इज व्हाट वी डू। देन वी डू पोर्टेबल सोलर बैटरीज। अगर आप आउटडोर्स में हैं, आपको अपने गैजेट्स पावर करने हैं, लैपटॉप्स पावर करने हैं, मोबाइल फोन्स करने हैं, तो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन। वी डू ऑनिंग्स। जब आप कुक कर रहे हैं, आपको शेड चाहिए, बारिश हो गई है, सो यू कैन बी अंडर द ऑनिंग, कंफर्टेबली आप रह सकते हैं। देन वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद इलेक्ट्रिक स्लीपिंग बैग्स, जो 5 वोल्ट के पावर बैंक पे चलते हैं, सो यू कैन सिंपली प्लग इन अ पावर बैंक और वो इलेक्ट्रिक स्लीपिंग बैग आपको हीट करेगा अगर बहुत ज्यादा सर्दी है बाहर। तो these are a few products we do with Nomad Adventures Overland. I would like to be in the future also be looked on as Toyota को हम सब बात करते हैं ना, कि एक तो products भी अच्छे हैं Toyota के, and then उसके बाद after sales support. So with Nomad Adventures Overland, we want to give you the best products possible in India, and also जो after sales support है, that is something we work very hard on. तो in the future अभी बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो हमारे products use करते हैं, बट आप लोग भी जो फ्यूचर में यूज करते हैं, सो यू कैन बी गारंटीड ऑफ अ वेरी गुड सर्विस आफ्टर सेल सपोर्ट फ्रॉम अस फॉर दिस इवेंट। दिस इज इट फॉर मी। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आई कैन आंसर नाउ, और मे बी आफ्टर द इवेंट वी कैन जस्ट मीट एंड टॉक इफ समबडी हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू। धन्यवाद सुलक्ष जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सुलक्ष जी की, कि हमारी कैंपर नीचे है एक्चुअली कैमल कलर की, उससे पहले हम इनका 3 to 4% का आरटीटी हम यूज करते थे। सुलक्ष जी को ये कहना चाहूंगा कि जब हम उसमें सोए हैं, मुझे तो अच्छी नींद आई है और सपने भी अच्छे आए हैं। और जहां तक आफ्टर सेल सर्विस की बात है जो उन्होंने कही, वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि मैंने जब भी उनको फोन किया है कुछ भी चीज के लिए, कहीं भी हमें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा, मैंने फोन किया, तुरंत उन्होंने मुझे गाइड किया है। सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ नोमैड एडवेंचर। आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे श्री दर्शन रावल जी को, जो बाइकर भी है, ओवरलैंडर भी है, कैंपर भी है और साथ में फोटोग्राफर भी है। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, वो शायद वही बताएंगे। मतलब दर्शन जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। गुड आफ्टरनून से शुरू किया था, इट्स ऑलमोस्ट गुड इवनिंग, एंड काफ़ी सारा नॉलेज भी टच हो गया, प्रोडक्ट्स भी हमने टच किए, सो आई वोंट बोर यू विद दैट। माई सेल्फ दर्शन रावल, बेसिकली आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, और यहाँ पर भी 5-6 साल पहले मूव हुआ हूँ।
And as he said, I'm a biker and a photographer too, and certified chef also. And हमारा एक association भी मैं run करता हूँ, Hotel Restaurant Association of Ahmedabad. We have about 5,000-6,000 members. And being a biker photographer, of course, so outdoors is part of the game and part of the life. So basically, I would like to thank Kunal and Vijay and all, because they are the one who introduced me to the group. I have interacted with many of you here. आपके साथ भी बात हुई है मेरी पिछले साल. So, but this is the first time I'm getting involved here. So I think सब लोगों ने जो भी बोला है, I agree to all, and उसमें कोई there is no second doubt about it. There is no even thinking about it कि भाई कुछ उसमें change है क्या नहीं है. Me being the last one or probably at the end coming in, so I think I don't have much to say on those part. I will say कि I would like to touch base on that कि भाई अभी हम लोग whatever we are thinking कि भाई overlanding community जो है उसको expand करना है through the association, through referrals और जो भी program है. Maybe some of you might not agree, but इसमें what I have found is being a biker कि हम लोग वो community को miss कर रहे हैं. So bikers also overland. So if there is a way we can communicate with them, we can amalgamate two groups, not groups, but two like-minded people from bike and cars. So I think we can grow rapidly. Bikers, as you all know, they go on small trips, breakfast trips every weekend. So अगर हम लोग उनको involve करते हैं, तो I am sure that at least one ride a quarter, साल में 4 बार, they won't mind coming in. So they also want to expand this. Second thing मैंने ये भी notice किया है कि we all talk about overlandings and gears and gizmos and all that. But जो एक average class है, they think that it's a rich man's hobby. So it's beyond their reach. So they want to explore that, but वो थोड़ा डर के अटक जाता है. So I think through our referrals या friends को या किसी को भी बुलाना है. I was just talking to Abhishek के भाई, I have a friend कि जिनकी daughter को लेकर वो decathlon में जाते हैं to get something. They see tent. अब वो tent लेके कहाँ जा रहे हैं? They don't mind spending 2,000, 3,000, 4,000 rupees on a tent. लेकिन वो लेके जाए कहाँ? So if we can tap that crowd, कि अगर हम लोग उनको बुला सकते हैं कि भाई आप अपनी ही कार में आओ, not necessarily you have to sleep on your car or inside your car or somewhere else. We might be on the top of our roof, लेकिन आप वहाँ पे आओ, there will be a space for you, and वहाँ पे आप you can join as a family, friend or whatever it is. So I think that particular segment that we need to tap to scale this association up rapidly. Once we have that number, beginning when I started my association, we just have like 40-50 log, and those are just prominent restaurateurs from Ahmedabad. Now we are almost 5,000 to 6,000 members across India, and that includes a smallest cafe or smallest restaurants, like 5-star, 7-star properties, all the resorts, all the adventure properties. They are all our members, either the owners or the partners or the GMs of the property. So in some way we can talk to them also. Like for an example, if I talk about Ahmedabad or Gujarat, I'm sure you know that ke yahan pe Run Riders hai, right? So we can talk to the owner of Run Rider. He's a good friend. Okay, we want to do something like this there. He'll be happy to assist us or he'll be happy to host us. So एक जो ये segment है bikers का, that's my opinion. I mean, many can disagree. और second है ये जो एक newbies, those people who have money, who have resources, but they are not sure of this. So as we all said कि भाई आप ये ले लो और करना शुरू करो. Rather just ask them भाई आपके पास जो भी गाड़ी है, just buy a tent, basic cooking का ले लो and just come on over. Indians have been overlanding since ages. पहले मेटाडोर में भर के जाते थे, they used to carry a Maharaj with them और गैस की बॉटल होती थी ये वो. So that thing is part of our DNA. अभी उसके बाद the whole thing and the whole idea has shifted to a viewpoint of a luxury. So most people think यार ये this is a rich man's hobby. कभी गाड़ी बड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. Not overlanding is not always about off-roading. So कई लोग उसमें भी confused है. भाई 4x4 हो तो ही मैं overland कर सकता हूँ because I have to get to that remote location. Not necessary. So basically creating an awareness. I think that part is missing. Otherwise scaling up is not a big deal. So those are the points that I think. Now coming back to the accessories, and from my experience, like as I said, I come from New York. So वहाँ पे there are, as
ध्रुव सेट के कैंप साइट्स होती है एंड एवरीथिंग इज देयर, यहाँ पे भी है, लेकिन इट्स नॉट एक्सेसिबल, या तो लोगों को पता नहीं है. So as you rightly said, we should have a database of those sites कि जहाँ पे simple every person has an access to, कि भी मैं जाऊँगा वहाँ दिखेगा वो कि मेरे आजू बाजू ये साइट है, let me go there, pay them 1,000 rupees a day, उसमें they'll be providing me this many amenities. So that is required. Second thing is कि accessories में I will always say, you know, I'm also a restaurant and hotel consultant. So there are people they will come to me कि ये लोग पैसे और मुझे बना के दो, किचन इतना बड़ा बना के दो. So I always tell them कि भी there will be a time when your kitchen will tell you कि अभी मुझे expand करो. So it will tell you. So same thing, I think same rule applies to your overlanding thing too. I mean less is more. You know, you are traveling, so less is more. But there will be a time जब आपका ही system या आपकी ही rigs आपको बोलेगी कि now I need to get this product in, I need to get this support in. So I think start slow. And one of the accessories जो मैं mark करता हूँ that not many people use here, or probably Vishal will agree because I had a word with him almost 2 years back, that not many cars are supporting, that is hitch. Hitch is such a versatile thing to use कि उसमें आप कुछ भी लगाओ, कुछ भी, even worst case बाद में आप एक बार you have a proper hitch, then you can have as many accessories and attachments as you want, चाहे वो towing का हो, lifting का हो, चाहे carrying bulk हो. I carry my motorcycle, you know, it's 300 some kgs. तो मैं उसको मेरी hitch के ऊपर I have a platform, तो मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ. It's a proper bike carrier, but that supports my car and my hitch. So I think hitch is a very good accessory that everyone should have. मुझे लग रहा है if your car is supporting again, you don't want to disturb your the mathematics and the other thing of the car. So those are the few things, and I'll wrap it up by saying this कि again जो newbies है, I will not call them overlanders but campers, जिनको करना है, आज मूवी में देखा रक्षक लेके निकल गए. If we tap that market, those people will turn into overland in no time, चाहे what car they are carrying or what gears they are. So I think that is the best market for our association perspective, अगर हम वो tap करें. And second, as we all know, most of the countries में bikers do overland. They have their own tent, they have their own gears. So यहाँ पे भी people want to do that, but they think कि भाई गाड़ी वाले हमको बुलाएंगे नहीं, and जो startups है, they think कि नहीं यार ये तो rich man's hobby है, हम इसमें fit नहीं होंगे. So we are losing out on a major crowd जो हम tap कर सकते हैं. I think that's about it. किसी को कुछ हो तो let me know, otherwise I'll wrap it up. Yeah, thank you. Thank you so much, Darshan ji. Darshan ji is into so many activities जो उन्होंने बताया नहीं, मुझे याद भी नहीं है अभी. लेकिन लास्ट मैंने कहा था फोटोग्राफर, उसके बाद बहुत कुछ है उनके पास. यूएसए में किया है, अब इंडिया आ गए, इंडिया में भी कर रहे हैं. तो शायद कभी मौका मिला तो उनके साथ बैठकर बातें करेंगे, कुछ सीखने का अवसर भी मिलेगा. अभी हमारे ग्रुप में एक यंग कपल है जो कई वक्त से ओवरलैंडिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कैंपिंग भी कर रहे हैं, और उनके पास बेहतरीन अनुभव है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी है. लेकिन आज मैं उनको इतनी विनती करूंगा कि ज्यादा लंबा ना कीजिए, शॉर्ट में कहें. तो मैं बुलाना चाहूंगा रुचि और दीपक जी को कि वो स्टेज पे आए और हमारे साथ अपने अनुभव को शेयर करें. You need to take subscription. This is a small video which was made by Better India. It's a media company है जो इंडिया की पॉजिटिव स्टोरीज पे बनाती है. तो they have taken an interview a year back. I thought कि अच्छा फोरम आपको दिखाने का before we tell something about us. Children and 3 dogs meet
college sweethearts Deepak and Ruchi Pandey, who are traveling the world on a home on wheels. What started as a journey on a Tata Indica has today become a full-fledged caravan with comfortable seating, a kitchen, a bathroom, two huge beds, an AC, and lots of storage. Deepak and Ruchi's tryst with traveling started when they first met in college in Dehradun. 20 years later, they have two children and three dogs, but their love for traveling has only increased. But to accommodate the entire family in a small car wasn't possible, so the couple started looking for vehicle options until the coronavirus pandemic hit, and with the lockdown, travel came to a standstill. When the lockdown was finally lifted, they found out about caravans, a concept familiar in foreign countries but not so much in India. Ruchi and Deepak decided to convert a tempo traveler into a caravan and design the vehicle themselves by watching online videos. They accommodated everything that they had at home: microwave, gas, bathroom, shower, and more. They added solar panels on top for electricity and installed the power backup for the rainy season. With a final cost of Rs 18 lakh, the van was ready on 26 July 2021. The first trip of the Pandays was to Leh Ladakh, which was amazing. Today, the couple travels an average of 200 kilometers a day, and the long term plan is to travel to 40 countries in the caravan. Thank you. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. At the outset, I, Deepak, and I, Ruchi, hashtag van life Indian couple. on behalf of everybody, I want to thank each one of you who made it from all over India, came here, and to make this event historic. Actually, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कि हम लोग कब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं. From last 22 years we are traveling, and जब कोविड हुआ तो तब उसके बाद हमें लगा कि नहीं, we were restricted at one place only. तब हमें लगा कि नहीं, कुछ अब ऐसा बनाना चाहिए जिसमें पूरी फैमिली एक साथ ट्रैवल कर सके. इसमें 2 dogs दिखाए, but we have 3 dogs and 2 grown-up sons also. Okay, the overlanding is not very new to us. करीब 20-22 साल हो गए हमको. Initially जैसे बोलते हैं कि पैसा नहीं होता, we start with Indica. Indica जैसी छोटी सी गाड़ी टाटा की, उसमें we used to have small bed बच्चों के लिए, we used to have a small tiffin, खाना भी नहीं बनाते थे. Then we graduated to a safari, थोड़ी फैमिली बड़ी हुई. Finally we came to a caravan. तो जर्नी बहुत लंबी हुई है, and I'm sure जैसे बता दें DNA में तो सबके DNA में. In fact ये हर लड़के का सपना होता है. मेरा नहीं, जितने बैठे सबका सपना बचपन से रहा है कि ऐसी गाड़ी हो जिसमें आपकी फैसिलिटी हो, खाने की, रहने की. तो सेम ड्रीम वी हैव आल्सो. And कोई था कि वो बोलते हैं ना, एक लाइन है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है सफर. तो हमने उसी को ही अपनाया है और सफर को एंजॉय करते करते मतलब अभी तक यहाँ पहुंचे हैं. तो लेट्स एंड बेसिकली यू सीन इतने सालों में हमने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं थे इंडिया में अभी तक. जब हमने स्टार्ट किया वी वर नॉट अवेयर, ना हमको समाज के बारे में पता होता था कि करना कैसे है. देयर वाज नो फोरम, देयर नो रेफरेंस, देयर वाज नो लीड. जो कैरवा भी बनाया तो फॉरेन में वीडियोस थे, पर हमारे पास कुछ नहीं था. तो प्रॉब्ली वी वर लुकिंग फॉर सम एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन जहां पर हम लोग शेयर कर सके अपनी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग. बहुत मिस्टेक्स हुए हमारे साथ भी. तो एक मिस्टेक में जैसे आपको दिखाते कि सोलर पैनल ओपन होने वाला था, तो दिस वाज द फर्स्ट हमने कैरवा बनाई, हमने ओपन होने वाला बनाया. उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी व्हेन द व्हीकल वाज ऑन मूव. सो देन व्हेन वी केम बैक फ्रॉम लद्दाख सर्किट, हमने उसको मॉडिफाई करा के हमने स्लाइड आउट करा. स्लाइड आउट में अगेन यही हुआ कि वो फिर चार्ज नहीं हो रहा था. तो थर्ड टाइम इवेंट उसको हमने फिक्स करवाया. तो दिस हैज बीन अ लर्निंग, एंड लर्निंग क्या वी कुड नॉट शेयर बिकॉज़ वी नेवर हैड एसोसिएशन. तो आज हमें फोरम मिला है, हम सबको ऐसा फोरम मिला है कि वी कैन शेयर जितने भी हम सीखा है. अदरवाइज जितना हमको इफ यू गो वेस्ट इफ यू डोंट शेयर नॉलेज. हमारे इस ग्रुप में इतने अच्छे मेंबर्स हैं, वो सच अ लवली नॉलेज, बट अगेन डॉक्यूमेंटेड नहीं है. तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट हमारे पास कि नाउ वी कैन डॉक्यूमेंट इट इन अ वेबसाइट. And now I'll tell about the experience as a lady. मतलब यूजुअली लेडीज नहीं जाती हैं ओवरलैंडिंग के लिए, बट जब से हमने ओवरलैंडिंग स्टार्ट करी है वी हैव एक्सपीरियंस कि एक तो हमारे बॉन्डिंग बहुत अच्छी पड़ी है. हमारी लड़ाई भी होती है तो बहुत जल्दी हम लोग मान जाते हैं कि आई थिंक सब लेडी मतलब मेरे संग वो करेगी, एग्री करेंगी. एंड थर्ड,
हस्बैंड्स घर में काम नहीं करते, लेकिन जब ओवरलैंडिंग में जाएंगे तो सब काम करते हैं और ये सब लोग एक्टिंग एग्री करते हैं इस बात के लिए। एक और पॉइंट है, कहते हैं मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट। जब से हमने ओवरलैंडिंग स्टार्ट करी है, हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ, छोटा एग्जांपल, इन घर में अपने बाथरूम में वी रिक्वायर मिनिमम अ बकेट टू टेक अ बाथ, और अगर आप टब में नहा रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग 5 लीटर, बट ओवरलैंडिंग में 100 लीटर के पानी में हम 2 या 3 दिन चलाते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। एंड खर्चे के ऊपर, जैसे अगर आप ओवरलैंडिंग में निकल रहे हैं तो आपके 2 जीन्स 3-4 टी-शर्ट विल टेक केयर ऑफ कंप्लीट मंथ, जो आपके वार्डरोब रखे रह जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ लर्निंग। आप इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, बिजली खर्च नहीं कर रहे हैं, एंड अपने कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैंडिंग। So we only agree that less is more, और we will be, मतलब बहुत चाहते हैं कि ओवरलैंडिंग और प्रमोट हो, और जो ये हमारी जो मीट होती है वो ऐसी होते रहे। एंड वन मोर थिंग, कि इतने सारे लोग जो हमारे फ्रेंड्स बने हैं आउटसाइड आवर ओन स्टेट, मतलब वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून, बट अभी हमारे हर स्टेट में फ्रेंड्स हैं, बैंगलोर, गुजरात, एवरीवेयर, मतलब जहाँ से हैं, हैदराबाद, एवरीवेयर। इनफैक्ट दिस कम्युनिटी, इसमें कोई एज बार नहीं है, ना क्वालिफिकेशन। मतलब जनरली क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स क्या होते हैं, क्लास के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, आपके ऑफिस कलीग्स, बट दिस एसोसिएशन ऑफ दिस पैशन जिसने हम सबको मिलाया है, यहाँ पर हमारे जूनियर मोस्ट से लेके सीनियर मोस्ट भी है, बट कोई एज बैरियर नहीं है। व्हेन वी सिट टुगेदर, इतना मजा आता है। कल शाम को बैठे थे एंड वी सच फन, जैसे हम कितने पुराने पिछड़े यार हैं। तो दिस इज अगेन अ लर्निंग। एंड लास्टली आई थिंक एक सिक्योरिटी पॉइंट सबका रहता है इशू की कितना सिक्योर है, हमें सब पूछते रहते हैं। तो मेरा एक एग्जांपल होता है कि यार अगर सिक्योर तो बैंक भी नहीं है, अगर आपने किसी ने करना है तो बैंक में भी आके चोर मिल जाएगा। हम अननेसेसरी घबराते हैं कि नीड नॉट टू वरी। आप हम दोनों वी आर ट्रैवलिंग अलोन। कई बार हम जो रास्ते में निकलते कुछ नहीं मिलता, पेट्रोल पंप में गाड़ी लगाते हैं, सो जाते हैं। इंडिया इज वेरी वेरी सेफ कंट्री। आपको हिल स्टेशन निकालना है, एंड प्रॉब्ली इसी वजह से इतने सारे ये हमारे जो कार कार्वेनिंग कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, बिकॉज ना उनका दिल का डर निकल गया है। जो डर था अब आउट हो गया है। अब इन सबको हमने जो ट्रैप करना है, सबको एक साथ एसोसिएशन लाना है, सो दैट ये प्रमोट होती रहे और आगे बढ़े। एंड दैट्स इट। एक तो डिसएडवांटेज क्या होता है लास्ट में बोलने का कि सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं तो कुछ ध्रुव ने ले लिए, कुछ हमारे सुलक्ष ने लिए, तो हार्डली वी डोंट रिपीट दोस। हां, ऑनेस्ट बार आपके पास ही है। तो ऑल दो पुराने वो लैंडिंग वाले हमारे एक ऑनेस्ट बार है, इसकी फोटो मैंने कल भी लगाई थी। तो दिस इज अ फैमिली, दिस इज अ ब्रदरहुड। आई थिंक वी मस्ट कीप डूइंग दिस। पहले जैसे बताया कि एनुअल मीट हो गई है, अब हम स्टेट मीट भी करेंगे एंड मोर फ्रीक्वेंट, सो दैट ये बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हेलो। अच्छा, दीपक जी ने ये कहा कि डर निकल जाता है, लेकिन वो बात से मैं अभी सहमत नहीं हूँ। वो क्यों नहीं हूँ बताता हूँ। दीपक जी ने शायद हमारा जो लास्ट ओवरलैंडिंग था, आई थिंक कुनो में मैंने उनको पकड़ लिया कि वो बर्तन साफ कर रहे थे बिसरपुर में। हाँ, बिसरपुर में देखा, उनको याद भी है, बिसरपुर में मैंने बुलवाए थे। तो उन्होंने कहा था कि कड़क बीवी हो तो ये सब कुछ करना पड़ता है, तो खाना भी नहीं मिलता है। तो दीपक जी, डर तो रहता ही है। तो आगे बढ़ते हुए मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे आज के टाइटल स्पॉन्सर्स डीजे टोयोटा को, 6 माइल, सिस्का, यूपीवी सोलर, बिमरा 4x4, C2 समिट, नोमाड्स ओवरलैंड, मार देगा वो मुझे। और इनके सपोर्ट के बगैर शायद हम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स को। मैं जानना चाहूंगा डीजे टोयोटा के राजीव जी ऑडिटोरियम में है कि निकल गए हैं? शायद निकल गए हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं।
तो मैं डीजे टोयोटा के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ आमंत्रित करूंगा, प्लीज आप आइए यहाँ पर। अभी से डर लग रहा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ओवरलैंडर फीमेल सोनी कोर को, वो यहाँ पर आए, प्लीज आइए। एक मोमेंट है आगे, सबसे पहला हमारे ओवरलैंडर फैमिली से सोनी कोर जी, अभी उनको एक छोटा सा मोमेंट एज अ थैंक यू प्रदान करेगी। किसी नींद में सुलाया है, वो हमारे जो स्पॉन्सर भी है, हमारे ओवरलैंडर मेंबर भी है, नोमाड एडवेंचर के। और चाहूंगा गीतिका तोमर जी को, प्लीज आप आइए और इन्हें एक छोटा सा गिफ्ट प्रदान कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच लव यू। बाकी की जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो उनका जो छोटा सा गिफ्ट है वो हम यहाँ से थ्रू कुरियर भेज देंगे उनको। अब आज के कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव आ गया है और मैं विनती करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट ओवरलैंडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मिस्टर सत्यजीत सरकार को स्टेज पे आए और वोट ऑफ थैंक्स करें। Ladies and gentlemen, our fellow overlanders, esteemed sponsors, and distinguished guests. So, as every good thing has to come to an end, and then as we draw the curtain of this remarkable day, I stand before you with a heart full of gratitude and a profound sense of fulfillment. On behalf of Overlander Association, I would like to thank my deepest thanks to all of you for joining us in celebrating our official launch ceremony of our association. Today we have witnessed the power of the community, the spirit of adventure, and the commitment of responsible travel. It's been an honor to have you here contributing to our success of this event in your unique way. First and foremost, I would like to express my sincere appreciation to our esteemed guests of honor, and also like to extend our heartfelt gratitude to our dedicated organizing committee, the volunteers and the sponsors. Your tireless effort behind the screen has made it possible, whatever we did today. Lastly, but certainly not least, I want to thank our members, our guests, and the online viewers who are also there with us over internet. Your presence here today is a testament of the strength of our community and your commitment to responsible traveling. You who has given us this purpose to form this organization, and with you we will continue to explore, learn, and make a positive impact on this overlanding world. With that, officially I declare the launching of the ceremony of Overlanding Association is concluded, and we look forward to see you on the road. And thank you so much once again with your time. Happy Overlanding to all of you. Safe journey. Thank you, Vice President Sir Satyajit Sarkar ji, for your word of thanks. अब इसको क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स एक के बाद एक नाम लूंगा, सब यहाँ स्टेज पे आए
Okay, I just want to introduce them. So I'll start with our president, Vishwa. Okay, let's move forward. Let me invite our vice president, Mr. Satyajit Sarkar. हमारे सेक्रेटरी राजीव जी, वो भी शायद थोड़े बाहर लगते हैं, कोई बात नहीं, प्रेस ब्रीफिंग है। हमारे ट्रेजरर खजांची जो पैसे का इतना कंट्रोल रखते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन रखते हैं, डॉक्टर अमित जी। हमारे मेंबर्स, यहाँ से शुरू करूंगा। दीपक पांडे जी, आप आइए यहाँ पर। हमारे प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं, मिस्टर विश्व किरण। हमारे सेक्रेटरी राजीव जी। इस तरफ सुलभ जी, आप आइए प्लीज। जॉइंट सेक्रेटरी यज्ञेश जी हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में रूठ जाते हैं, तो उनको बनाना पड़ता है। यज्ञेश जी इज अ जॉइंट सेक्रेटरी। यज्ञेश जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। आई एम सॉरी, आई हैवंट टेकन द परमिशन, बट आज का जो प्रोग्राम का जो सक्सेस रेट है, मतलब एक अमुक लेवल तक, वो पूरा श्रेय इनको जाता है। Tirelessly he has worked very hard on his own. हमेशा 11 नंबर की बस में ही ट्रैवल करते थे ये सक्सेस के लिए, यानी अपने 2 फीट के ऊपर। Right. So now I'll invite Kalpesh ji. Sanjoy ji. अच्छा, मैं अभी अमन जी को आमंत्रित करता हूँ, स्टेज पे आए प्लीज। उसके बाद हमारे सुबोध भाई। वी ऑल्सो हैव एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। देखो बीबी यहाँ भी डांटती है, छोड़ती नहीं है, मौका मिलना चाहिए बस। रुचि प्लीज आप आइए स्टेज पर। ये एक ही है जो हमारी गाइडिंग लाइट है, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है, सीधा AK-47 निकाल लेती है। अच्छा, we have executive members also, so may I invite through North on the stage please. The youngest of all, हालांकि मेरे से यंग नहीं है, फिर भी youngest of all, यशोदीप पाटिल प्लीज। So these are the guys, यही लोग हैं जिन्होंने मिलकर, शायद मैं अपना नाम ना भूल गया हूँ, मैं हरीश कुमार इनके साथी हूँ। तो यही लोग हैं जिन्होंने एक सपना देखा, बातें की, डिबेट्स हुए, और उसके बाद फॉर्म हुआ है ओवरलैंडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर अ गुड डीड, अच्छा करने के लिए। तो आप लोग सब यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद। हाई टी का प्रबंध है, तो प्लीज चाय पी के, बिस्किट्स वगैरह कुछ खा के जाइएगा। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
लेडीज को बुला लेते हरीश भाई जो नहीं बोले मैं वो भी बोल लेता हूँ। ये है कि ये चल रहा है। हाँ, तो ये टी शर्ट और कैप बनाने में हमको जो मदद किया है वो सारा रेज योर हैंड। और ये हरीश भाई जो अच्छा बात बोल रहे थे, सारा कुछ सिखाया फाल्गुनी भाई ने। प्रेसिडेंट सर नहीं दिख रहे। बगल में जाओ यहाँ पे ऐसा सही बोले So smile. Cheers. Thank you. Okay. Done. थोड़ा Yes. Yes. सारे everybody yeah hooray yeah thank you वो मिसिंग था। चलिए नहीं, यहाँ पर ऐसे खड़ा हो सकते हैं। So may I request जितने भी गेस्ट अभी इस हॉल में हैं सब आगे आ जाइए, आपके साथ हमें एक तस्वीर खिंचवानी है।